Good evening once again from the Multan Cricket Stadium. Here we are, ready, steady for match 10, day 5. This is the big encounter. Northern versus Sindh. The top team versus the second one. The umpires are ready. These two sides are going to lock horns and they are looking very, very good. So we're expecting on a wicket like this, there's going to be a high scoring game. It might go down to the wire. At least we can expect that. I've got Azhar Ali to my right, and we'll look at the two sides. Yeah, big encounter today. Northern looking strong as ever. Their run in T20 has been exceptional. Zishan Malik, Ali Imran, Haider Ali, all in good form. Shadab Khan playing exceptionally well as a captain, both with ball and bat. Umar Amin is another great batsman for them. Asif Ali is a good finisher. Rohil Nazir chipped in the last game as well. Nawaz, Amir, you name it, they have it all. Sindh, Khurram Manzoor, Shajil Khan, Azam Khan, Sarfraz Ahmed, they're all very capable of playing some match-winning innings. Ehsan Ali up at the top, he's obviously might bat up the order. So both teams looking very strong, but Northern, they've been tough cookie. They're nobody able to beat them apart from only once or twice. Their openers walks in, Zishan Ali and Imran Ali. Both are very talented young cricketers. Let's see how they start this power play. They do have their strong bowling lineup, Northern, but their batting has been up to the mark as well. So the Sindh bowlers had their work cut out. Yeah, and Sindh, or Sarfraz, so to speak, loves chasing. And the conditions demand as well. From the last 2 days, you've seen dew has played a major factor. And it's been very tough for the spinners, not just for the spinners, in fact. The quick bowlers also have not been able to put in their variations properly, the slower ones. The fielders have struggled in the outfield. Good thing to see Mohammad Amir playing his first game in this one for Northern, leaving out Sohail Tanveer. And here Hassan Khan, the left-arm spinner, bats well. Mir Hamza comes in, so they're relying on one more quick. But right now, Sohail Khan, he's done well. Did well with the bat in the first match. He's bowled well. He's been amongst the wickets. And he too is one of them who bowls that slower bouncer, back of the hand, slower ball, can bowl quick as well. Yes, of course, Sohail would like to start and bowl a lot fuller and try and swing the ball. That's his strength, and he got it one slip in place. So they would like to pick up early wickets because they don't want Northern to get off to a flyer. Looking at Northern, they probably will have to search for any problems for themselves because they've got good starts going on. Zishan Malik in form. Ali Imran did well the other day. Haider Ali in superb form. Shadab comes in with big hits. Asif has got that firepower. Umar Amin is there. Rohil Nazir, talk about him. First 2 balls, 2 sixes. Nawaz can finish off well. So, yeah, Haris Rauf amongst wickets. They're sorted out. They look very balanced. And they're looking for another good start here. They won't mind batting first. But yes, they will eye a big total here. First game got us 222. And here goes match 10. Sohail Khan to Zishan. Good start by Sohail Khan. He's the guy who pitched the ball up, tried to swing it away most of the time. And he got his feel. He has a strange kind of start, fielding start, where he has deep point and third man up. But they have some plans against Zishan. You probably think that he goes over square quite a lot. They feel like more plans against Sohail Khan because he tends to give you variation and sometimes provides width. And here, width for fast bowlers, problem. For the second. Good running between the wickets. Intent straight away. That's what I like about these young players from Northern, where they come and they show intent either with the bat or with the running between the wicket. Great example of that. Second ball. Sindh really need to work hard in the field. We've seen in the last few games, we've seen some
tight bodies in the field, so they need to work harder on in the fielding department. Nicely worked away. Should be a couple again. There's a big gap there on the onside. Just taking a little bit of time, Zishan. That's how he likes to start. But looking at the plans of Sohail Khan, he's bowling quite straight at the moment. It's not giving any width, which probably he saw the Balochistan and Southern Punjab's bowler got hit a lot on the square, so they probably had some information about that. He's trying to angle that in, resulting in an extra one. He has the tendency of bowling it away from the right-hander as well. That's why he got that slip in position. Right now the fast bowlers from all the teams in the back of their mind, they are just focusing the stumps because they know this is a good batting track and they don't want to deviate. When two good sides clash each other, you get the best of it, best of individuals. Individuals come up and perform, they like those challenges. And this game will decide who goes on number one in the table. Dangerous line this, with third man up in the circle. It was there for the taking, but Zishan missed out there. There's not much movement on the ball, but he was just a bit late on it. Still that deep square leg. And you've got that deep point, backward point. Now the radar is still to be fixed. Looking at this wicket, you must be itching to put on those pads and go out there. The kind of runs that are available watching the first match. Well, to be honest, when you play a lot of red ball cricket and you leave a lot of the balls, and when you see white ball being smashed all over the place, you would say like, I need some freedom and go out there and just hit the ball. Yeah, that's the position that the protection has been placed for. Sarfaraz is quick to understand what his bowlers are like, what they like bowling. You probably see Asghar coming from the other end. Left arm spin with a new ball is his trademark, Sarfaraz. Yeah, Sarfaraz likes to use spinners inside the circle, especially up in first couple of overs. So let's see what he's off to do today. That line worked for him against Kamran Akmal. He chopped it onto the stumps. That's the end of the over. 8 for now. Different strategy today. We haven't seen Sindh not using a spinner with a new ball since they've added Mir Hamza in place of Hassan, so left arm quick from the far end.
Bat on ball, bad line. You've got to pay for it. 4 leg buys. Yeah, a bit of swing for Mir Hamza, but the line was wrong. Started off too straight, and Sarfraz have very little chance to stop that, and that's a boundary start for the over for Northern, and a breathing space as well. Too wide outside the off stump. So at the moment, Sindh bowlers are all over the place. This is the 3rd wide already. We've had 4 leg buys as well down the leg side. They haven't been put under pressure yet, but that's where you need to start off well. You need to set the tone up front. If you're not been smashed yet and you're still giving away runs, it's going to cost. Four paces today for Sindh. You've got Mohammad Hasnain as well. Anwar Ali fills in with overs. Sohail Khan, Mir Hamza. Options are there in spin. You can use Danish as easy if required. The Asghar will bowl his full overs. Probably the due factor was in their mind as well if they have to bowl second time, you know, when they have to defend maybe, because toss is never under your control, but they've probably seen the conditions, how hard it is for the spinners sometime. They probably chose their attack accordingly. Apesh, but in the gap, that will earn him a boundary. Too much width once again from Mir Hamza, allowing Ali Imran to just open his arms. Yeah, width on offer, and it was there to hit. Didn't time as he wanted to, but got the desired result. You can see the width on offer. Got enough of it between cover and mid-off. Straight, and this is a better shot. More control, more power behind it, more bat on it. That's a great start from Northern. 21 already in the second over. That was there again to hit, and it's a better shot, as you said. It is more closer to him, and he went straight back at the bowler and timed it perfectly. That forces for us to quickly have a word with this bowler. Just get a feeling they're trying to do a little too much. That's better inside edge. That's unlucky. Runs will be added to the total. That's T20 cricket. You go for two boundaries, and then there's a lucky boundary around the corner anytime. So that's where you need to bowl good lines all the time, because you will find lucky boundaries here and there. There was nothing wrong from Mir Hamza there. It was just pure luck from the batsman. Cost him 4 again. 3 boundaries in a row. Eight of the first over, and this time around 3 boundaries in a row. One through the covers, one straight, one up the inside edge. All are adding to the total. These T20 players break bats too many times because they keep trying to smash the ball. Sometime handle goes, sometime bottom of the bat, sometime edges. Cricket is so fast right now that you need to carry a lot of bats with you, especially when you're playing white ball cricket. Dot ball. 25 for none.
Imran 13, Zishan 5. That's the kind of start they'll be looking for, and they've got it. Sohail Khan gets into his second over. Played uppishly, lands safe, earned them a couple. Again, we could say that Sohail was lucky he wasn't hit for a boundary. Got a really bottom part of the bat. This field placement surely working for Sindh right now, but the lines of the bowler, they need to work a bit. They need to adapt very quickly here, because otherwise the Northern batsmen will take the game away from them. Yes, it will be due on the second half of the game, but you don't want to let them score too much. I think I'm having a look at how Mir Hamza went. Sarfaraz might want to introduce his spinners and get rid of their overs as quick as possible before the due factor comes in and plays its role. These days, T20 cricket, you need to have more of all-rounders or part-time bowlers so that the options increase. You've got to be good in all three departments. Of course, you have the specialists. That's a better length from Sohail Khan. Closer to the stumps, just kind of a length ball, which dies a little bit on this pitch. So the bowlers need to bowl a little kind of hard length and not much width, where batsmen get a little bit scrambled inside. So where Sohail Khan bowled the last ball is kind of an ideal length on this pitch. Slightly short on that occasion. Still two are easily available. It's a very predominantly offside field at the moment. And it's not really helping the cause. I think Sarfaraz is suggesting to take the slip out and have the mid-wicket. I believe that's a bit good idea, because when you're trying to bowl straight to the stumps and you don't have mid-wicket, it's an easy two option for the batsman. Even though he missed time that last ball, he managed to get two out of it. Yes, there is a wicket-taking option in the slips, but if you're looking to bowl straight, you need to have mid-wicket. Edge missed by the fielder there. I'll run down for 4. Won't be wrong to say they're leaking runs at the moment. Not a bad ball, a bit unlucky. Shajil could have just stopped that, but ball was going away from him. It was considered as a lucky boundary. But it doesn't matter how they come, as long as they come. That's better. End of the over. It's 34 for now. Back once again live here at the Multan Cricket Stadium, match 10, Northern versus Sindh. Sindh winning the toss, electing to bowl first. Continuing with Mir Hamza.
Gone over the keeper. That's another boundary here. Not much you can do about that. Can't complain to the bowler anymore. Yeah, unfortunately, right length ball, but unlucky. It was a lucky shot, but that's how T20 cricket goes. Fortune favors the brave. Ball jumped a little bit on Zishan, but he managed to get an edge on it and found the gap as well. The advantage you can take as a fielding side is that they are not clean hits, so the batsman will not be so settled. Unlike this one, this is very high in the air, might go a bounce or two, and that's, I don't know about that effort. He's pushed the rope with his body, so we'll have to go upstairs, I'm pretty sure. That's a poor effort by Hasnain on this level. He should stop this. That's a poor effort from Hasnain. Might just cost a boundary to Sindh. Yes, it does. It was nicely struck. Didn't get full hold of it. It went really high. It's a boundary for sure. We saw in the replay. That's the hold up. He's reconfirming with upstairs. Pulled away and just over. More runs here for Northern. That's too short on that occasion. No, no, no. You don't want from your fielders effort like this. Two lazy efforts in 2 balls. Not fair with the bowler. This should have been caught. Not the kind of start Sindh would have hoped for. Now they brought the 3rd man in. Oh, that's well done. That's really well done down at short 3rd man. Is that Azam Khan? Yes, great effort from him. Finally, someone put his hand up. It's a great effort. It was 4 for sure, but he stopped 4 runs for his team. That's the kind of effort you need. Soft hands again, trying to steal a single inside the circle. Only thing I see in the Sindh team, they don't look as fit team as the other teams are, especially Northern. They are young, they're energetic on the field, but you can see the body language. If you just see the offside, you see 3rd man point cover, extra cover, it doesn't look a very fit side. Played up-ish and over the inner circle. 1 bounce into the fence, another boundary. Now this truly is the bowler's line that has earned the batsman that run. End of the over, it's gone. 4 bowled, 45 for no wicket. I think if I'm not wrong, we'll ask our stat man.
This must be the best start. 4 overs, 49. We haven't seen a start like that up till now in the 9 games. But one thing, I'm very surprised. We haven't seen Sarfaraz not using a spinner to slow things down. Now he's got Hasnain. As you feel that a quick outfield, the batsmen are trying to use the pace on ball, so as a captain you probably would like to slow things down. Asghar has done well, and you also are looking at the dew factor coming in later on. Strange. There must be something in Sarfaraz's mind, otherwise I've seen him using the spinner on any kind of pitch up front, but he didn't do it today. Off the hips, nicely worked for a single. Even to the fact that when Mir Hamza was hit for 3 boundaries in his first over, he called him back again for another one. Now Hasnain needs to step up because he's their strike bowler, and surely Sindh needs their wickets right now because Northern is already on 50 now after 4.2 overs. Ali Imran batting on 27, Zishan on 16. In the air, and there's an opportunity here for deep square leg, and that's been put down. Or has he caught it? Finally, Sarfaraz confirms it is. The way the reaction was, he was looking down into the ground as if he dropped it. So that's the first wicket gone. Hasnain strikes. Wicket was needed, and what Hasnain provided to Sarfaraz, it was a high catch, and Hassan Ali took it very nicely. It looked like at one stage that he dropped it, but Ali Imran goes for 27. New batsman, Haider Ali, in form batsman for Northern. Must have impressed you. You watched him, how he played his knock in England. But he's out there. That's a wicket. Short ball, quick. Got a bit late, but a nice catch. Under pressure, when your team is not fielding well, when the ball goes in the air, the butterflies get to your tummy. You start thinking, why me? The ball did swirl away at the last moment. He did well to dive to his left. Here is Hasnain again. And all this 50 is also up for Northern in the 5th over. In fact, it's 51 now. You asked about Haider Ali. He's a rising star. Also has great temperament. It's not easy to debut and score runs, and the way he batted was impressive to see, and I hope he can do a lot more for Pakistan. That's the aggression you're looking for. If you have pace, don't hesitate to bowl short. And if you can direct it like the way Hasnain did, it's a very nice ball to bowl in T20 cricket. When the batsman is coming on the front foot trying to hit the ball, make sure he knows that you are at him.
Cut away nicely. That is well done down in the deep, and that just rolls over the rope at the same time. So appreciation taken back, and it's a boundary to end the over. 5 overs bowled, 55 for 1. बचपन पे एक बड़ी शॉट है, देखना बड़ी शॉट है। देखेंगे कि स्पिनर को लाया गया है मोहम्मद असगर। इनका बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्ट हुआ है, इनकी बैटिंग बहुत तगड़ी है। असगर जिन्होंने पिछले मैचेस में नया बॉल किया है, उनको आज छठे ओवर में लेके आए हैं। जहां और उनको खुशामदीद कहा, हैदर ने एक बहुत बड़ा छक्का लगाकर, और आमतौर पर अपनी इनिंग्स से आगाज़ में ही ये मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के एरिया में ऐसा शॉट खेलना इनको पसंद है। अपनी उस रवायत को बरकरार रखा है जो इन्होंने शुरू की थी ओल्ड ट्रैफर्ड से। स्ट्रेंथ है इनकी ऑन साइड, और खासकर लॉन्ग ऑन से लेके मिड विकेट तक। तो असगर को थोड़ा सा ऑफ स्टंप पे ही कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो वही किया असगर ने, ऑफ द बैक फुट खेलकर 1 रन बनाया। हैदर अली ने बहुत बड़ा स्कोर नॉर्दर्न ने बना लिया है इस पावर प्ले के ख़त्म होने से पहले तक, 62। इससे पहले इन्होंने केपी के खिलाफ 6 ओवर्स में जो रिकॉर्ड स्कोर बनाया था, मज़र हमें बताएंगे, 68 रन बना लिए थे पहले मैच में। तो अपना रिकॉर्ड बेहतर करने की पोजीशन में आज। केपी की, तारिक भाई आपने बात की, कल जो हमने केपी का मैच देखा तो उनकी बैटिंग इस बार उठता हुआ शॉट खेला, लॉन्ग ऑन के फील्डर जा रहे हैं, बैकवर्ड दौड़े लेकिन अनवर अली नहीं पहुंच सके। अच्छी कोशिश की थी। रात को फ्लड लाइट्स में सफ़ेद गेंद ऊपर से नीचे आते देखना आसान नहीं होता फील्डर को, खास तौर पर जब आप बैकवर्ड दौड़ रहे हो। ठीक है, बिग शॉट्स हैं बॉय, बिग शॉट्स कमिंग लैड्स। इस मरतबा ये फ्लैट हिट है, कोई मौका नहीं है अनवर अली के लिए। 4 रन। जीशान आमतौर पर थोड़ा सा वक्त लेते हैं, लेकिन आज शुरू से ही अपने स्ट्रोक्स खेल रहे हैं, पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं फील्ड लिमिटेशंस का। छठा ओवर है, इसके बाद फील्ड खुल जाएगी, लेकिन 2 चौके 1 छक्का हैदर अली का यकीनी बना रहे हैं कि पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल हो। ये जो पिछला कमेंट्री स्टंट था अजहर अली और सिकंदर बख्ता, उसमें जिक्र हो रहा था कि स्पिनर को क्यों नहीं लाया जा रहा, तो इसी वजह से थोड़ा हिचकिचा रहे थे पावर प्ले में, क्योंकि स्पिनर के लिए कोई मदद नहीं इस पिच में। सरफराज अहमद, यही वजह थी उनकी हिचकिचाहट की असगर के इस्तेमाल में। इस ओवर में 14 रन बने, 69 पर 1। एहसान अली मिड विकेट जाओ, मिड विकेट जल्दी जाओ, 1 मिनट ऑन जाएगा। अंपायर नासिर हुसैन चलो शाबाश शाबाश इशारा शाबाश दे रहे हैं बोले। सरफराज अहमद और
दोनों टीमों को 5 फील्डर्स बाहर निकाले जा सकते हैं। हसनैन को लॉन्ग ऑन पर भेज दिया गया है, लॉन्ग ऑफ पर असगर को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डिंग करेंगे एहसान अली। डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग के इलाके में भी एक एक शख्स को देखा जा सकता है। बॉलिंग करने के लिए इस वक्त सिंध के लिए आजमाया जा रहा है दानिश अजीज़ को। अच्छे बैटिंग ऑलराउंडर हैं दानिश अजीज़ को, ज़्यादा मौके नहीं मिले हैं हालिया दिनों में। और सरफराज जब कप्तानी करते हैं स्पेशली T20 में तो स्पिनर्स पे बहुत इनका इंसार होता है। थोड़ी देर तक गेंद हवा में रही लेकिन पहले गिर गई थी दानिश से। और अब उनकी यही कोशिश होगी कि क्योंकि पावर प्ले में इतना ज़्यादा स्कोर हो गया है कि 3-4 ओवर ऐसे हों जहाँ पे बाउंड्री ना लगे। अभी तक ये ओवर एक ऐसा रहा है जिसमें न सिर्फ कोई बाउंड्री नहीं लगी बल्कि कोई रन भी नहीं बना। हर गेंद एक तिलाई है जिस पर रन न बने इस फॉर्मेट में। ज़ीशान ने इस बार ऊंचा शॉट खेला और ये बुलंदो बाला छक्का। इस बार पहुंच गए थे, गेंद को विद द स्पिन खेला पिच पर आते हुए। ज़ीशान बहुत जोरावर क्रिकेटर हैं, इंतहाई ज़बरदस्त इस्तेमाल किया उन्होंने कदमों का। उसके बाद जो बैलेंस था जब वो शॉट मार रहे थे इसीलिए ये बॉल इतना दूर गया। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप डाउन द विकेट आते हैं तो बैलेंस अपना खो देते हैं, ऐसा नहीं हुआ ज़ीशान के साथ। जी हाँ, यही सरफराज हौसला अफजाई कर रहे हैं कि आप फ्लाइट ना दीजिए, इसी तरह तेज़ बॉलिंग करते रहिए। ऑफ द बैक फुट खेला, 1 रन बना और दूसरे रन के लिए भी पलट आएंगे। सरफराज अहमद ने जो बाउंड्री राइडर्स रखे हुए हैं काफ़ी हैवी वेट्स हैं, दोनों तरफ स्क्वायर के 7 ओवर्स मुकम्मल हो गए 77 पर 1। कुछ तकलीफ में लगे हैं। ये देखें थ्रो आई, उसके बाद ये जो इनकी टक्कर हुई है थोड़ी ज़ोर से टकराए हैं सरफराज के साथ। सरफराज हालांकि ऐसा लगे कि ज़्यादा सरफराज को इफ़ेक्ट होना चाहिए था। सरफराज उठ खड़े हुए हैं। प्रॉब्लम देखिए ज़ीशान को प्रॉब्लम आई है कुछ, शायद हेलमेट की वजह से इनको ज़्यादा झटका लगा है। 77 रन्स पहले 6 ओवर्स का अपना ही रिकॉर्ड बेहतर बनाया, 69 रन्स स्कोर किए नॉर्दर्न ने। ज़ीशान मलिक पेश रहे हैं इस रिकॉर्ड को बनाने में। पहले दिन भी हैदर के साथ उनकी गजब की पार्टनरशिप हुई थी 180 रन्स की, जो कि नया रिकॉर्ड है दूसरी विकेट का पाकिस्तान में। ये एक साथ मिलकर खेलना पसंद करते हैं दो नौजवान क्रिकेटर्स। ये पहले नवीद मलिक ओपनिंग किया करते थे उवैस ज़िया के साथ, जब ये नॉर्थ की टीम आती थी, रावलपिंडी रैम्स के नाम से खेलती थी। हाँ, एक ही रन बन सका, अच्छी फील्डिंग की, खुद गए असगर गेंद को रोकने के लिए। लेकिन जब से मोहम्मद वसीम कोच बने हैं उन्होंने इस टीम का हुलिया तब्दील किया है, नया खून टीम में शामिल किया है। नौजवान खिलाड़ियों की वो हौसला अफजाई कर रहे हैं टॉप ऑर्डर में। बिल्कुल, और इतनी नॉर्दर्न की स्ट्रेंथ बन गई है T20 में
कि लोग अब कंपैरिजन कर रहे हैं इनकी सियालकोट स्टैलियन से। जिस तरह सियालकोट स्टैलियंस ने डोमिनेट किया पाकिस्तान की नेशनल T20 को, पिछले साल नॉर्दर्न चैम्पियन बने, और इस साल जिस तरह की क्रिकेट देखने को मिल रही है तो लोग यही कह रहे हैं कि शायद 2020 के सियालकोट स्टैलियन जो है वो नॉर्दर्न है। लगातार 8 मैचेस जीत चुके हैं। इस बार फील्डर पहुंच जाएंगे लॉन्ग ऑन से। अनवर अली, अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा, बिल्कुल ब्लॉक होल में असगर ने ये गेंद फेंकी थी। लगातार 8 कामयाबियां हासिल की हैं नॉर्दर्न ने, और अगर आज का मैच वो जीत जाते हैं तो ये तीसरा बिगेस्ट विनिंग स्ट्रीक होगा नेशनल T20 कप की हिस्ट्री में। और इससे पहले 10 फतुहात लगातार हासिल की थी लाहौर लायंस की टीम ने 2012 से 2014 तक, और सियालकोट स्टैलियंस की सबसे ज़्यादा हैं। उन्होंने 25 लगातार फतुहात हासिल की, जिनका भी जिक्र आपने भी छेड़ा था बाजीत। सियालकोट स्टैलियंस का पहला नंबर है, लाहौर लायंस का दूसरा नंबर है, और आज की कामयाबी के बाद नॉर्दर्न तीसरे नंबर पर आ सकती नवी कामयाबी के साथ। सेकंड कॉल और पहुंच के स्टार्ट में रहो दानिश, स्टार्ट में। अगर आप सिंध की फील्डिंग देखें तो उसमें काफ़ी ऐसे फील्डर हैं जिनको आप कहेंगे कि बहुत तेज़ नहीं हैं। हसनैन हो गए, आज़म खान हो गए, शर्जील हो गए, ये वो फील्डर नहीं है जो कि जिसको आप कहते हैं कि लाइटनिंग इन द फील्ड। थोड़ा सा इनको इसका भी प्रॉब्लम आ रहा है। अगले ओवर में मज़ीद बात करेंगे इसी उन्वान पे। 8 ओवर्स यहाँ मुकम्मल हुआ चाहते हैं 83 पर 1। मुल्तान में चांदनी रात है इस वक्त, ये आप देख सकते हैं खूबसूरत मंजर अपनी स्क्रीन पर। फ्लड लाइट्स इस वक्त पूरे जोबन पर हैं, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पर भी, तो बाहर भी रोशनी है, अंदर ज़्यादा रोशनी है। ऑन साइड में खिला गैप में, इस बार आसानी के साथ दूसरा रन हासिल कर लेंगे। हैदर अली अच्छे रनर हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। तारिक भाई, इस टूर्नामेंट में हमने देखा कि कई मैचेस वो टीम जीती है जिसने फील्डिंग अच्छी की हो, जिसने गलतियां कम की हों, लेकिन अगर आप सिंध की टीम में देखें तो ऐसे जो तेज़ फील्डर हैं उसकी कमी। अनवर अली मेरा ख्याल पाकिस्तान के बेस्ट फील्डर्स में शुमार होता है, लेकिन उनके अलावा जो फील्डर्स हैं ज़ोरदार हिट लगाना चाहते थे, उसमें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन फिर भी 4 रन्स मिल गए। बहुत ज़ोर से बल्ला घुमाया था जीशान ने। हाँ, बाहरी किनारा थर्ड मैन की तरफ बॉल गया। ये अगर आपसे सही कनेक्ट ना हो तो आपकी उम्मीद यही होती है कि ऐसी एज लगे जो कि बाउंड्री के बाद चली जाए, और वैसा ही हुआ। तो बात यह है कि अगर आपके पास T20 में स्पेशली जब क्लोज गेम होती है तो फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपके पास वो फील्डर्स नहीं होते जो कि या तो रन बचा सकें या तेज़ी से को बाउंड्री बचाएं या रन आउट करें, तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और हमने देखा है इस नेशनल T20 में कि मैचेस बहुत बड़े बड़े क्लोज जा रहे हैं। स्कोर ज़्यादा हो रहा है लेकिन मैचेस क्लोज जा रहे हैं। तो जब क्लोज मैचेस होते हैं तो अक्सर यही होता है कि जिस टीम ने फील्डिंग ज़्यादा अच्छी की हो वो मैच में कामयाब हो जाता है।
इस बार फाइन लेग की जानिब रवाना किया। ये ख़राब गेंद थी, लेग स्टंप की तरफ निकल रही थी, लेंथ भी बैट्समैन को मैसर आ गई। शॉट खेलने से बिल्कुल घबराते नहीं हैं ऑन साइड में हैदर अली, और बहुत ही ज़ोर से जो भी इनकी शॉट जाती है बहुत ही ज़ोर से जाती है, लेग साइड पे स्पेशली। मिड विकेट, स्क्वायर लेग, मिड ऑन, जिधर भी लेग साइड पे ये शॉट खेलेंगे तो उसमें बहुत कुव्वत होगी। इस पिच में इतना ज़्यादा बाउंस नहीं है जितना सेंट्रल पंजाब के खिलाफ था। अनवर अली ने उस दिन खासा परेशान किया था पंजाब के बैट्समैन को। और ये बड़ी ख़तरनाक पार्टनरशिप है, इससे छुटकारा पाना ज़रूरी है, वरना ये मैच से मुखालिफ टीम को बाहर कर देते हैं। दोनों 26 गेंदों में 45 रन अभी भी बना चुके हैं। और कल शाम का जो मैच था केपी का, उन्होंने 200 रन स्कोर किए थे और उसके बाद ओस भी काफ़ी, बॉल गीला भी काफ़ी हुआ, लेकिन फिर भी वो मैच जीत गए। मेरे ख्याल नॉर्दर्न भी यही सोच रहा होगा कि 200 के लगभग स्कोर ज़रूर करें। अपनी रफ्तार को कम किया। ज़िशान मलिक 1 रन के साथ स्ट्राइक रिटेन करेंगे। 9 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो गया, 1 विकेट पर 96। दोनों बैट्समैन घबराते नहीं हैं गेंद को हवा में खेलने से। फॉर्मेट ही ऐसा है वाजिद, क्योंकि आप इन दिनों इस्लामाबाद में रहते हैं, बड़ा अरसा हुआ लाहौर से आप चले गए, तो ये रावलपिंडी की क्रिकेट की कामयाबी की वजह क्या है? वहाँ T20 क्रिकेट ज़्यादा होती है क्लब की सतह पर। देखिए पिछले कई सालों में उस रीजन में, इस्लामाबाद पिंडी में क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली गई है। अगर इस्लामाबाद की मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा ग्राउंड बन गए हैं, तो अपॉर्चुनिटी क्लब क्रिकेट की और उस तरह छोटी क्रिकेट की वो बढ़ गई है। यहाँ पर ज़िशान मलिक ने अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की, 50 रन की बड़ी जारहाना और धुआंधार इनिंग्स, महज 32 गेंदों में 4 चौके और एक जोरदार छक्का लगाया। दो 200 रन अब तक 7 बार बन चुके हैं पहले 9 मैचेस में। और ये देखिए इनिंग्स से पहले, निस्फ से पहले ही 100 रन तो बन गए, तो ये उसी तरफ जारी है इनिंग्स। लग ऐसे ही रहा है, और अभी तो इनके पास ऐसे प्लेयर हैं जो लंबे लंबे छक्के मार सकते हैं। अभी बैटिंग नॉर्दर्न की ऐसी है कि 8वें नंबर 9वें नंबर तक वो प्लेयर हैं जो कि ग्राउंड क्लियर कर सकते हैं। अपना रनअप और ज़्यादा मुख्तसर कर दिया है असगर ने इन दिनों। 3 से 4 कदम चलते हुए आते हैं, फ्लैट बॉलिंग कर देते हैं। एक ज़माने में बहुत इनके नाम का जिक्र था, ये ऑस्ट्रेलिया भी गए थे 2016-17 के दौरे पर। सिडनी के टेस्ट मैच में उम्मीद थी कि इनको खिलाया जाएगा। वेस्ट इंडीज़ का भी दौरा किया था, लेकिन अभी तक स्टार उनके सीने पर सजा नहीं। क्या वजह क्या रहेगी? जब उन टूर पे गए थे तो लग ऐसे रहा था कि खेल जाएंगे, वो खेले नहीं, फिर रेडार से बिल्कुल ही हट गए। वजह कुछ समझ नहीं आई, शायद कहते हैं कि एकदम लॉस ऑफ फॉर्म है बॉलिंग में, लेकिन एकदम 3 महीने में इतने गिर गए, ये समझ में नहीं आई। 102 पे
102 for 1 halfway through. They reached almost 50 in 4.5 overs, so you'd say to a certain extent they pulled them back, but still in a very good position, Northern. Nicely picked. That is a trademark Haider Ali shot. Beautifully done, effortless. What a shot by Haider Ali right there. Young stunner Haider Ali. Just starts off with a bang. You saw that in T20 before too. Gets in his air, just picked it off his pads, lofted it in the air. There you saw it, the ball flying. Beautiful shot by Haider first off to Hasnain. Just see that, just great balance, short trigger, and just picks that ball up for a beautiful 6. With that 6, Tuck and PCB is going to plant 10 more trees all over Pakistan. Sikandar. Another slam. They pitched a little bit short. Nicely pulled off the front foot for a single. Northern is in for a big score. I was contemplating how much they're going to get over here, Sikandar. Azhar already says 230 plus. I say around 210 for a couple of pictures. Let's see what happens. But the way it's going in Multan Cricket Stadium right now, Zishan Malik on fire. 50 of 32, 4 fours, 1 6. A random dot ball in this inning for Sindh. With wickets in hand, with Asif Ali down the order, Sikandar. Northern has already played really well. The great partnership between them two right now. They're going to look for 210, 230 plus for sure. But with the firepower that Sindh also has and how flat this wicket is and how much high scoring these runs are, it's going to be an exciting finish. Should be a boundary there. Full toss, just bending your knees a bit and just playing it in the gap. It's pretty obvious that this is a very good wicket and you will get runs here. As long as the bowling side, you know that you're not giving freebies. This was trying to york him, just ending up as a low full toss. Smart play, they're running the runs. The run between the wicket is hard. Got an easy 2 right there. Nice flip from Sarfaraz, but not happy with Hasnain there. Just smart batting, Sikandar. Just got a boundary, went for a double, staying at the crease, rotating straight. Sindh needs wickets here, a couple of them, to get back into the game, to just slow things down. As far as runs go, nicely done. He waited for that one. What is the placement, how he comes back for 2. Whoa. He took his eyes off the ball and did not bounce as he expected. Gets it on top of the handle. 11 gone, 115 for 1. Just a bit of a break. Zishan took his eyes off the ball in the last ball of the previous over. He's lucky, could have gone anywhere on the visor, top of the helmet, but eventually went and banged right on top of the handle of the bat. The idea was right, it was pitched short, but it just didn't take off the surface. As the partnership between the two. 65 of 39 balls. Great partnership between both of them. Sikandar, they both are very attacking players.
And playing on a pitch like this, where high score is always in demand, they're playing to their strength. They get the area in the slot. They're playing fearless cricket. Shadab Khan, it's his birthday today, but he's always mentioned before that all Northern wants to do is play fearlessly all these games. Is there a bit of bat? There was a bit of bat involved in that, was it? Otherwise, gotta be a wide. Just see, bowled wide. Ooh, it's like an inside edge maybe. Very well, boy. I know. Just look at that classy wrist work, Sikandar. One thing about Haider Ali that I've always noticed, his last year there was a rain delay between Northern and Sindh team in Islamabad. Hit hard by Zishan, but yes, Sikandar, like I was mentioning, last season there was a rain delay between Northern and Sindh, and all Haider was doing in that meantime, we're just talking to all the big players in our team, Asad Shafiq, Fawad Alam, Komal Manzoor, just very eager to learn whatever time he could spend with them. That's what we do over here with Bazid Khan. We try to sit as close as possible to him and try to learn what not to do on him. You can just do that by listening to him when he talks. See, the plan is simple by Asghar. Just bowl it wide of the crease with extra cover being back, 3 fielders on cut. Just try to bowl to his field. High in the air, this is a good shot. 6 on any ground. That's such a big problem to end the over well. Just bowl it right under the bat. 12 gone. It's 123 for 1. Anwar Ali has been brought into the attack from the commentary end. It's 123 for 1. 8 overs to go, 9 wickets in hand. Nicely placed, Northern at the moment. The table toppers, the defending champions. And Sindh have looked out of sorts in the field with the ball. The only thing that's gone in their favor up till now is the toss. They won the toss and they're doing what they love. Chase. Just a bit of room, a little bit of a charge, and make it a low full toss and smash it through covers just like that. Well directed by Anwar Ali, but too good by the batsman right there, making room. Bullet 4 right over extra cover. Just Zishan Malik is just on fire. He's seeing the ball like a football. Had fielders had no time to move whatsoever. He picked his target from before. He knew which area maybe Anwar Ali is trying to bowl that Yorker. Made that room, saw that mid-off and extra cover is up, and just placed it wherever he wanted it. That's the kind of pitch this is. I think there's a ball delay. Well, the ball must have gone to one of the stands. There we go. Azam has collected that ball. Umpires will just check up on the ball in a second. It's just having match awareness. Like I said before, batsmen will always, on this kind of a pitch, when bowlers are under back foot, start of the over, that's where it's important for the batsman to take command. If you get a boundary off that first, second ball, that really dictates the pace of that over. The bowler is under pressure tremendously, automatically.
Once again, giving it a charge. Rightly done by Anwar Ali. Dropped it short. See, Anwar Ali knows he doesn't have that express pace, but he has that tight line and length, and he relies a lot on his experience and his variation. If you notice the 6 balls that he bowls in an over, he'll bowl a couple of Yorkers, a slow bouncer, a bouncer, wide of the crease. He keeps changing things up. Pretty spread out field on the onside. Just that short, fine leg in there. Picked up again. He finds a gap. 3 men patrolling the onside, and talk about placement. Classic Haider Ali. He's playing like he's playing a video game, Sikandar. Now look at that. Wrist work. Nicely picked up. Knows exactly where the fielders are. And you take your chances when you're in form. It truly is a batting paradise. Season just literally started. Players and teams are just 2-3 games in each. And it's going to be a long season with T20 right now. And PSL is also coming, 4 days coming. No way better to get confident than Multan Cricket Stadium. At this rate, you'll probably get another 100 runs or so with 9 wickets in hand. And easily get to 230 plus. Finding those pressure points. Dr. 2 balls to go in this over. And was been a little bit on the higher run side today. Oh, that was not an easy miss by Hassan Ali right there. Almost cost him a boundary. An extra run right there. Sloppy work right there. Maybe his little slippery dew is on the ground now, Sikandar. It's been the highlight of the day. Even in the afternoon, we saw the same. I don't know. There's no crowd. What are you being distracted by? Just took his eyes off the ball just when he was about to collect it, actually. That's my point. Where are the eyes? There is no one out here. Short fine leg beaten. Another boundary. Wrong line. Sarfaraz is covering his face with his gloves. It's just coming in way too easy for Northern at the moment. 13 gone. 139 for 1. Spread out field once again on the onside as more pace is on offer. If we look at the Sindh team today, got a lot of quicks. That's the partnership, 89 of 51 and going strong. Mohammad Asnain, Mohammad Suhail Khan, Mir Hamza, Anwar Ali, all pace on offer. Is high in the air. This has got to be taken. Sarfaraz wants it with the gloves. He goes almost to point and takes that one. Well done. The captain makes sure that he doesn't leave the responsibility on anyone else. Wicket number 2 goes, and just when we show the partnership, it's been broken. Mir Hamza with the breakthrough right there. Looks like a change of pace right there. Tried to go over mid-wicket, up in the air. Sarfaraz Ahmed with the safe hands. Nicely catch, nicely caught right there by Sarfaraz. This is the breakthrough they wanted. Most likely Shadab, the captain's gonna walk in right now. But Haider had a fine knock. Northern 139 for 2.
Northern's captain Shadab Khan walks in. He said it's his birthday today. Happy birthday to you, Shadab. We never received any cakes on this side of the ground. Haider Ali was celebrating his birthday the other day. We're always the left out ones. Shadab's been good. He earned a man of the match. This is the wicket of Haider. Got on the toe end of the bat. And immediately it was the captain, Sarfaraz, who wanted it. And a better option, the glove man, when things are pretty greasy and wet out there. Finds the gap. Suddenly the chase is on. And the ball wins the race. So more runs for Zishan Malik here. 72 now. Gently placed by Zishan Malik, but swiftly that ball went. Zishan Malik is just looking too good today. Anything, any ball that he's placing anywhere, it's just going towards the boundary. No one's going to be stopping that once it's gone past the 30-yard circle. You can just see the vision, the tunnel vision in his eye is just ready to maybe look for that 100. There's enough time. Leading edge, almost a chance to run out here. Let's see his highlight reel. It looks like his whole inning has been a highlight. Just look at those shots. Just cut, pull, ready to go down the track. Big hit down the track, right off the middle. Just straight shot. Just Zishan Malik is just placing wherever he wants and is going towards the boundary. On a mission, 72 of 43, ample of time to get 100, make a mark, leave an impact, leading from the front. Northern, everybody that's performing really, really well for them. Straight as you like. Wants to push for the second. Shadab's quick, one of the quickest. It shouldn't be a problem for him. It's important when you come out there, can't make the game go on your pace. Start joining in and make sure that you're part of that party, that your team is celebrating. Fast bowlers haven't had a laugh here. It's not been a good day for quicks. Anwar Ali is gone for runs. Mir Hamza 1 for 34 and it's 2.4. Looks like Zishan Malik has pulled a hammy right there. Physio just running to the field. It's been hot and humid here in Multan. What a beautiful shot by the drone right there, Sikandar. This is a beautiful stadium, and sadly, this just humidity in Multan at this time of the year is just so high. It needs a stretch, needs some water, needs some hydration. Needs a break. Everyone gets a break, but we don't get a break. We're looking at Zishan. He's got good 72 runs of 44. There's been a lot of running around, some big hits. We've had quite a few stopovers since morning in the first game as well. That game almost went on for 3 hours 45, I think, with all the breaks included. And again, we see some attention being given. Here's the drone shot of the ground, the Multan Cricket Stadium. That's the wicket on the right that has produced the maximum number of runs, the one they're playing on today. And then you've got that mat over there, which produces scores in the excess of 155, 160. That's a defendable total there. These are the 4 strips that are used. And in the middle is Zishan Malik getting the treatment. Most likely the doctor's going to give him a few pills to have right now for hydration. He needs to be just drinking as much water as possible, electrolytes. Just look at that, just that view of the moon. It's a kind of just beautiful shot. Been captured.
This is taking longer than we expected. It's from a full, from a muscle pull to a full massage. It's taken a while. Now we are all set. The umpire, Mr. Afridi, said, you got to make a decision, buddy. Either bat more or you got to go. Nice breakthrough by Mir Hamza. Just keep looking at the view. Just take the drone as high as possible and get that aerial shot, Sikander. Just a thing of beauty. Somewhere in the corner to the right is us. We can't be seen. We're just sitting somewhere in that stand. And just behind us somewhere is Bazid Khan having his dinner. Well bowled. Nice bounce, good carry, just beating the outside edge. A little pacey there by Mir Hamza right there. Bend his back there. A little lapse of concentration. Zishan after this break. He's struggling with his hammy. So just tune in once again. The ball really just kicked off the pitch there. Mir Hamza is fired up, but wicket, feeling a little bit more confident. It's always been good for Sindh so far. No ball, signaled by the umpire, and a throw again at the non-striker. So there's an extra run, and there's a free hit. Have a look at that again. Oops. That looked tight, Sikander. Yeah, we're at an angle at the moment. But yeah, it looked like that. If it's on the line, that's umpires. Fair call. So Shadab's got a free hit. Where does he go? Picks it up high and should earn him 1. And coming back for 2. That's a new way to get a double, Sikander. End of the over. It's 149 for 2. Let's have a look at the field since Sohail Khan is just practicing his run up. He's the 3rd man in place. There's a deep backward point. Extra cover mid-off. That's the offside field. On the onside, you've got a short 3rd man. You've got a deep square leg, which is now coming in. Wideish mid-wicket, right at the rope, and a long on. And that's quite wide as well. Square leg comes inside the circle. Sohail Khan, the leading frontline bowler for Sindh, starts off with the wide. You got to be careful with Zishan Malik. He likes to favor that mid-off area with cover, extra cover, mid-off, all 3 being inside. He can look to get a boundary over the top right there. Good start again. Sohail Khan will have to reload for this ball. That's us right there. Sitting nice and comfortable. Good view from here. That's a quick single. Direct hit would be good, and just shy at this time. Hasnain fired that ball to the stumps, but unfortunately he missed. But it looks like an easy single. The way Zishan Malik has played this innings, Sikander, looks like deserves a good 100 over here. I said at the start of the innings, the start of the day, that runs out for grabs on this wicket.
to do is just take that opportunity, and we saw Shan Masood earlier. Now we've got and Khushdil. Zishan is now doing well, 76 or 47. Shadab finds gap here, surely coming back for two. Might be a third on the throw, but no, good recovery in the deep. Good stop by Hassan Ali, but yes, you're right. There's been runs galore here at Multan Cricket Stadium. Nice little low full toss Yorker. Clip to the leg side, Shadab ran quick over there. Tailor-made for this situation. Handy wickets in hand also. Northern for sure is going to post a big total, but you got to know Sindh has all the firepower to chase this target. Good contest here. Sohail likes to mix it up. Shadab wants to hit it out. What next? Charging. Khan allows them to come for the second. Sarfaraz is livid. He's been saying Aram se, Aram se. Field is feeling a little bit of the pressure under the pump. Just taking his eyes off the ball, wanted to produce a direct hit. More changes now. Now square legs pushed back. Who's coming in? It's mid-on. Almost played a ramp shot. Just a single. Sohail is doing well. He's mixing it up in terms of pace and length. He's not really allowing Shadab to get that desired pace on the bat, so he can freely express himself. There's more power required. Had he bowled quick, this would have just gone over third man. Bowling towards his field, he knows where he wants to bowl. I mean, with third man being back, with point being back, he knows where he wants, what areas the batsman is trying to get runs at, and he's trying to limit that real quick. Long on being out, last ball of the over, bowled a good over so far. Another slower one, but this time it beats cover. Boundary to end the over. And more questions to be asked. 160 for 2 after 15. There's space available. That's what he was trying to do. Good stop there. Deep point. The batsman come back for 2. That's well done. Good commitment. 2 to end the over. It's 162 for 2. एक 160 पे 2 आखिरी 5 ओवर का खेल अब रह गया है। शान 80 पे, शादाब 7 पे। लग ऐसा रहा है कि ये 200 तो आराम से क्रॉस कर जाएंगे। 220 का शायद टारगेट अब करेंगे, 220 को। मीना, हमने कल का जो मैच देखा था उसमें भी ऐसे था। अभी तक तो ये नहीं लग रहा कि बॉल गीला हो रहा है या ओस
अभी तक आई है। देखना ये होगा कि ओस आती है या नहीं ओस होगी, लेकिन केपी की बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि बावजूद उसके कि उनको मुश्किल कंडीशंस मिली, बुरी कंडीशंस मिली बनिस्बत, और फिर भी वो कामयाब रहे उस मैच में। नो बॉल और फ्री हिट। इस वक्त सिंध के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। सामा मीर आइडिया हो गया था उन्हें कि शादाब क्या करना चाह रहे हैं। क्लियर नो बॉल है, ओवर स्टेप कर गए। नो बॉल्स भी काफ़ी देखने को मिली, कुछ फ्रंट फुट की थी, कुछ हाइट की थी, जिन पे बैटर्स ने भरपूर फ़ायदा उठाया। ये तो काफ़ी बड़ा ओवर स्टेप है। फ्री हिट शादाब फेस करेंगे। देखते हैं सामा मीर क्या हरबा बनाए। और कोशिश यही थी कि लॉन्ग ऑन के ऊपर से सिर्फ एक रन होगा। कैच तो पकड़ा गया लेकिन फ्री हिट थी। शादाब अमूमन ऐसे ही करते हैं कि ऑफ स्टंप पे चल के, ताकि वो लेग साइड पे शॉट खेलें। यानी ना केपी की बॉलिंग में 4 इंटरनेशनल बॉलर्स थे। अगर आप नॉर्दर्न की बॉलिंग देखें तो 5 के 5 इंटरनेशनल और T20 स्पेशलिस्ट है। देखिए हारिस रऊफ, शादाब, आमिर, ये तो आजकल पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप है। तो टॉस जीत के वैसे सरफराज तो जो भी मैच हो कोशिश उनकी यही होती चेस करें, लेकिन उनके लिए बहुत ज़रूरी कि ड्यू फैक्टर अपना काम करे। क्योंकि जिस हिसाब से स्कोर हो चुका है, जिस हिसाब से रन्स बन चुके हैं, जितनी स्ट्रेंथ नॉर्दर्न की बॉलिंग में है, लेकिन हम फिर रुझान उसी तरफ जाता है कि शायद नॉर्दर्न ही इस मैच में हावी हो, क्योंकि ओवरऑल टीम बहुत अच्छा खेल रही है। प्लस जो स्ट्रेंथ आप देखते हैं उसमें तो यही लगता है कि अगर इनकी बॉलिंग सेकंड हो तो कोई भी स्कोर डिफेंड कर ले। एक रन हासिल करेंगे। नॉर्दर्न की बॉलिंग पे नज़र जब डालते हैं तो कोई भी वीक लिंक नहीं नज़र आता। T20 में स्पेशली जब बड़ा टारगेट लगा हो, आप 2-3 बॉलर्स पे प्लान करते हैं कि इनको देख के खेलना है, टारगेटेड एरियाज में इन पे स्कोर करना है, और जो वीक लिंक है उस पे मैक्सिमाइज करना है। लेकिन नॉर्दर्न के पास इस तरह के कोई ख़ास बॉलर है ही नहीं जिस पे आप टोटली जिसके टारगेट करके जिसको मार सकें। विकेट पे 16 ओवर 167 for 2। सोहेल खान अपना आखिरी ओवर करने आए हैं। ईशान मलिक को 16 रन्स चाहिए सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। फील्ड जो सोहेल खान ने ली है वो शॉर्ट बॉल के लिए ही ली गई है। पॉइंट पीछे है, स्क्वायर लेग, मिड विकेट,
फाइन लेग और थर्ड मैन। ऑफ साइड पे अगर आप देखें तो सर्कल में ही है फील्डर, तो फील्ड के मुताबिक बैट्समैन ये सोच सकता है कि बॉल सोहेल खान शॉट ही करेंगे, आगे नहीं करेंगे। और बोल्ड कर दिया, तो जीशान सेंचुरी नहीं करेंगे। 84 रन पे सोहेल खान ने उनको पवेलियन में वापस भेजा। अच्छी बॉल, थोड़ा सा रूम दे के ऑफ साइड फील्ड को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे, लेकिन सुहेल खान ने विकेट्स में बॉल रखी और यू मिस आई हिट वाली सिचुएशन थी, लेकिन एक उम्दा इनिंग्स खेल के गए हैं ज़िशान मलिक। 84 पे उनको पवेलियन लौटना पड़ेगा, नॉर्दर्न का नुकसान है। यही स्ट्रेंथ है नॉर्दर्न की। अब आसिफ अली अब आए हैं बैटिंग करने, तो इनकी बैटिंग में इतनी डेप्थ है कि हर प्लेयर T20 के मुताबिक हर प्लेयर जो है वो ग्राउंड क्लियर कर सकता है, बिग हिट्स लगा सकता है। अब आसिफ अली इस मौके पे आए हैं, उनकी तो स्ट्रेंथ ही ये है कि पावर हिटिंग करते हैं, और इनके अगर 2-3 अच्छे ओवर लग गए तो शायद ऐसा हो जाएगा कि सिंध को मैच से कंप्लीटली बाहर कर दें। और सोहेल खान अनलकी रहे, बॉलिंग फील्ड के मुताबिक तेज बॉलिंग कर रहे हैं, शॉर्ट बॉल का प्लान है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टॉप एज लगा और बाउंड्री। अच्छी बॉल थी, वेल डायरेक्टेड थी, शॉर्ट पिच कराई और ये लकी रन्स कह सकते हैं। पुल करने की किसी पोजीशन में नहीं थे शादाब, लेकिन फिर भी बाउंड्री हासिल की। फिलहाल तो रन्स जो हैं वो नॉर्दर्न की साइड पे ही जा रहे हैं। इस विकेट पे मुसलसल शॉर्ट बॉल करना वो भी थोड़ा मुश्किल है, जान लगती है काफ़ी। ये बॉल भी शॉर्ट ऑफ लेंथ थोड़ा सा शायद स्किड कर गया और विकेटों में लगा, लेकिन प्लान यही है कि आगे बॉल ना किया जाए, बैट्समैन सामने हिट या फ्रंट फुट पे कवर मिड ऑफ इधर ना मार सके। तो ज़रूर मुश्किल काम है, लेकिन इस वक्त और कोई बचत नज़र नहीं आ रही। ये मुश्किल काम सोहेल खान ही कर सकते हैं। ये वो विकेट है, स्किड कर गया था, उस लेंथ पे आया नहीं, उस हाइट पे नहीं आया जिस पे एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक वाइल्ड स्विंग था। सोहेल खान की अच्छी बॉलिंग। एक और बाउंसर की जानिब जा रहे हैं सोहेल खान। और इस दफा कामयाब हुए, मिड ऑफ के ऊपर से शादाब खान चौका हासिल किया। सोहेल खान पूरी शॉर्ट बॉल नहीं करा सके शादाब खान, फिर ऑफ स्टंप पे उन्होंने शफल किया। इन फील्ड में फील्डर होने का फ़ायदा भरपूर उठाया और बाउंड्री हासिल की। अच्छी शॉट थी शादाब की जानिब से, और यही वो कीमती रन हैं इस वक्त नॉर्दर्न के लिए, जो उनको स्कोर करने हैं और सिंध को बचाने हैं। सोहेल खान का ये आखिरी ओवर, आखिरी बॉल उनके स्पेल की। हसनैन के शायद 2 ओवर हैं। शॉर्ट बॉल शादाब ने पुल किया, कैच होना चाहिए। अनवर अली ने आसानी से कैच पकड़ा, तो सोहेल खान को कामयाबी मिली। शादाब को बता रहे हैं कि भाई मुझको पुल नहीं मार सकते। सोहेल खान आखिरी बॉल पे विकेट हासिल कर ली इन्होंने। शादाब खान अच्छी फॉर्म में लग रहे थे, अटैक करना लाजमी था, लेकिन
कनेक्शन बनाया लेकिन बाउंड्री पार नहीं कर सके, हाइट ज़्यादा पकड़ ली थी, डिस्टेंस इतना नहीं था और अनवर अली इस तरह के कैचेस नहीं ड्रॉप करते। वेरी सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। नॉर्दर्न को एक और नुकसान। शादाब खान 12 बॉलों पे 15 रन स्कोर करके वापस पवेलियन। उमर अमीन बैटिंग करने आए हैं। रुहेल नज़ीर ने पिछले मैच में आती 2 छक्के मारे थे, वो नहीं आए। मैं देख रहा हूं कि सिकंदर मुझे कमेंट्री बॉक्स में नहीं नज़र आ रहे, उनको विकेट कीपर से खासा प्यार है। रुहेल नज़ीर को नहीं भेजा। खैर उमर अमीन बैटिंग करने आए, लेफ्ट हैंडर है। हसनैन और लग यही रहा है कि सिंध ने डिसाइड कर लिया है कि शॉर्ट बॉल ही करेंगे और शॉर्ट बॉल में ही बचत है। बिल्कुल अच्छा स्लो शॉर्ट बॉल कराया था हसनैन ने। यंग हैं लेकिन इस स्टेज पे उनको पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा कि किस तरह कंटेन कर सके रन अपनी टीम के लिए। शॉर्ट बॉल भी देख के कराना पड़ेगा। उमर अमीन को फ्लिक करना पुल करना अच्छा लगता है, लाइन बहुत मैटर करती है। बहुत ही तेज शॉर्ट बॉल हसनैन के पास पेस है। ये बॉल काफी फ्लाई किया ऑफ द सरफेस। एक और अच्छा बॉल हसनैन की जानिब से। पिछला थोड़ा स्लो था, इस बार एक्सप्रेस पेस के साथ आए। लेंथ अच्छी है, मुश्किल होगी बैटर के लिए इसको मनूवर करने के लिए। फील्ड के हिसाब से बॉलिंग करा रहे हैं फिलहाल। 2 अच्छी बॉलें, लेकिन ये ओवर पूरा अगर फिनिश अच्छा कर पाए तो सिंध के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। फील्ड में कुछ तब्दीली की है। शॉर्ट फाइन लेग अब प्लेस पे आ गई और डीप मिड विकेट थोड़ा सामने की तरफ रखा है। तीन डॉट बॉल तो हसनैन ने आगाज इस ओवर का बहुत ही ज़बरदस्त। 18वें ओवर में अगर आप डॉट बॉल 1 करें तो बड़ी बात होती है, 3 करें। शादाब खान शॉर्ट बॉल जो कि कामयाब रही है पूरे टूर्नामेंट में और सिंध के लिए आखिरी ओवरों में काफ़ी मुफीद रही है। मरीना, कल मैं उमर अमीन से बात कर रहा था, इस दूर से बात कर रहा था, करीब नहीं गया था। बाल इनके काफ़ी लंबे हुए हैं। खूबसूरत शॉट सामने। पुल शॉट तो अच्छा खेलते हैं लेकिन सामने भी बहुत खूबसूरत बैटिंग करते हैं उमर अमीन। पूरा फायदा उठाया हसनैन ने। लेंथ बॉल दी थी और फील्ड के हिसाब से ये बॉल करानी जो है वो महंगी पड़ सकती थी, जो कि पड़ी। अच्छी बेस, फुल स्विंग ऑफ द बैट, कुछ बाउंसेस और बाउंड्री अच्छी हासिल की। अच्छा ओवर जा रहा था, 3 डॉट बॉल्स कराई थी लेकिन 1 चौका हासिल किया। 2 बॉल्स रिमेनिंग है। प्रेशर अब हसनैन। तो कल इनको मैंने देखा तो इनके बाल बहुत लंबे हुए हुए थे, तो मैंने कहा बाल कटवा लो। कहते नहीं, बाल कटवाऊंगा तो फिर छक्के नहीं लगेंगे। तो देखना ये है कि आया कि आज वो छक्का मारते हैं। अगर तो इन्होंने नहीं मारा छक्का तो कल फिर मैं इनसे बोलूँगा कि भाई वो टोटका जो था आपका वो कामयाब नहीं है। अभी तक तो उन्होंने मारे हैं इस टूर्नामेंट में छक्के। हो सकता है यही राज हो, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट देखी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी गेम में चेंजेस ज़रूर लेके आए उमर अमीन। पिछला T20 फाइनल जितवाया था इन्होंने अपनी बैटिंग से नॉर्दर्न को। आसिफ अली स्ट्राइक पे आ गए। आखिरी बॉल है हसनैन का। अभी तक सिर्फ 5 रन दिए इस ओवर में। अच्छा ओवर जा रहा है, लेकिन क्या ये फिनिश अच्छा कर पाएंगे या नहीं। कैच होना चाहिए। अनवर अली कैच बहुत ही कम छोड़ते हैं। सिंध के बेस्ट फील्डर, प्रॉब्ली पाकिस्तान के वन ऑफ द सेफेस्ट फील्डर्स। एक
हसनैन को एक और कामयाबी और 18वां ओवर हसनैन ने बहुत ही उम्दा किया। फिंगर्स रोल की स्लो बॉल था, लेंथ थी लेकिन पेस नहीं थी। आसिफ अली सीधा मारना चाहते थे छक्का, लेकिन सिर्फ अनवर अली को कैच दे बैठे और बाकी वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स। सिंध को रिलीफ होगा कि आसिफ अली को वापस डग आउट जाना पड़ रहा है। 5 रन बना के आसिफ अली आउट। मोहम्मद नवाज आए हैं बैटिंग करने और सिकंदर कमेंट्री बॉक्स छोड़ के बाहर चले गए हैं। बहुत ही गुस्से में उन्होंने दरवाज़ा बंद किया है क्योंकि रोहिल नज़ीर को नहीं भेजा, लेकिन लेफ्ट हैंडर शायद इस वजह से उनको प्रेफर किया गया है। लंबी हिटें मारते हैं, मिड विकेट उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अनवर अली 19वां ओवर सिंध के लिए करने आए हैं। 8 बॉलों पे 21 किया था रोहेल ने पिछले मैच में। पहली बॉल पे छक्का, दूसरी पे छक्का, फिर चौका। ऑल ऑफ अ सडन फेवरेट हो गए हैं तकरीबन सबके ही। बब्बू टैलेंट्स है उनमें। उमर अमीन फेस करेंगे अब अनवर अली को। सिंगल होगा अनवर अली, क्योंकि इनकी उतनी पेस नहीं है जितनी हसनैन और सोहेल खान की है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट बॉलिंग करेंगे। स्लोअर वन पे रिलायंस होगी, शायद कोई यॉर्कर की भी कोशिश करें। लेफ्ट हैंडर जब बैटिंग कर रहा होता है तो जो राइट आर्म बॉलर है उसके लिए यॉर्कर करना मुश्किल होता है। लेकिन देखना यह है कि जो फील्ड सेट है, अब थर्ड मैन पीछे भेजा है, स्क्वायर लेग, फाइन लेग सर्कल में है, तो शायद स्लोअर वन पे इंसार होगा। अब पॉइंट पीछे जा रहा है और थर्ड मैन ऊपर आ रहा है, तो लग यही रहा है कि स्लोअर वन के लिए फील्ड सेट है। प्रोबेबली आउटसाइड ऑफ स्टंप पे कराने की उनकी पूरी कोशिश होगी ताकि बैटर की रीत से थोड़ा दूर करा सके। नवाज के पास क्या जवाब है इस बॉल का, देख। उमर अमीन ने पॉइंट की तरफ और शर्जील ने बॉल रोक लिया। हमने इस टूर्नामेंट में काफ़ी ऐसा देखा है कि बॉल घूम के बाउंड्री लाइन के फील्डर्स को चकमा दे चुका है, लेकिन शर्जील ने ऐसा ना होने दिया। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया बाउंड्री पे। लो फुल टॉस था आउटसाइड ऑफ स्टंप। यही तकरीबन लाइन लेंथ रहेगी अनवर अली की, बीच में थोड़ा शायद लेंथ चेंज करें। उमर अमीन सीधा भी अच्छा मारते हैं, फ्लिक अच्छी करते हैं, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर भी मारते हैं। इम्पॉर्टेंट ओवर है ये सिंध के लिए, उतना ही नॉर्थ के लिए। फिर फुल डिलीवरी, शायद 2 रन दोबारा मिल जाएंगे, लेकिन सिंध के लिए ये इतना बुरा रिजल्ट नहीं है। बाउंड्री बस रोकने की कोशिश। एक्स्ट्रा कवर में चौका हासिल करने की कोशिश थी, लेकिन 2 रन हासिल किए। एरियाज वही टारगेट कर रहे हैं। अच्छा कमबैक कर लिया सिंध ने, 2 विकेट्स गिरी क्विक सक्सेशन में। और कैच छूट गया। एहसान अली, ये पहले भी हमने बात की थी कि सिंध की फील्डिंग कुछ इतनी मोबाइल नहीं है, और ये तो रेगुलेशन कैच था जो कि छोड़ा गया। सिंध ने एक और चांस ड्रॉप किया है, और इस तरह के कैचेस अगर आप T20 में छोड़ेंगे इस तरह की कंडीशंस में, बहुत महंगा पड़ेगा। अनवर अली और सरफराज खुश नहीं होंगे, लेकिन एक जिंदगी मिली उमर अमीन को। नवाज ऑफ स्टंप से बाहर, सामने उठा के खेल दिया है, लेकिन बाउंड्री ना हासिल कर सके, सिर्फ सिंगल हुआ।
इस ओवर में अभी तक अनवर अली ने बाउंड्री कंसीड नहीं की, जो कि उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। शायद एक विकेट भी ले सकते थे। ये 19वें ओवर की आखिरी बॉल, 190 में 5, 7 रन हो चुके हैं इस ओवर में। तो फिर कवर में खेले, बाउंड्री नहीं मिलेगी तो अनवर अली का अच्छा ओवर। 19वें ओवर में सिर्फ 8 रन और नॉर्दर्न 191 फॉर 5। पुल किया लेग साइड पे, स्क्वायर लेग की तरफ, बाउंड्री हासिल की उमर अमीन ने। उमर अमीन पूरी सलाहियत रखते हैं T20 क्रिकेट में, अब हर तरफ खेल सकते हैं। ये इनके जोन की बॉल थी, हसनैन ने की लाइन और लेंथ जो है वो उनके लिए आइडियल थी। डीप है क्रीज में, इसकी वजह से ये लेंथ अच्छी बना सके और इजी बाउंड्री उमर अमीन के लिए। बॉलर की डिस्कशन चल रही है। आपने आज प्रेडिक्शन दी थी इस विकेट पे, सुबह विकेट 249 के करीब स्कोर होना चाहिए। सुबह के मैच में तो करीब गए, लेकिन फिलहाल पास भी नहीं। हाँ, सुबह की मैच की प्रेडिक्शन ही की थी, शाम में तो आपने पिच रिपोर्ट की तो प्रेडिक्शन आपके सर पे थी, लेकिन 231 में सेटिस्फाइड हूँ। हालांकि बड़ी मेरी हेल्प की बिलावल भट्टी, हसनैन तलत ने, ताकि वो स्कोर उस तक पहुंचे। एक सिचुएशन पे तो मैं लग रहा था कि शायद कमेंट्री ना ही करूं, क्योंकि प्रेडिक्शन जो थी वो 60-70 रन से रह जानी थी। लेकिन 231 काफी क्लोज है 249 के। Hit through the offside, आउट हो गया दूसरे रन के लिए वापस। तक नॉर्दर्न का स्कोर पहुंच गया। लग ऐसा रहा है अभी तक कुछ असरात नहीं नजर आए कि बॉल गीला हो रहा है या कोई ओस है। लेकिन हमने ये देखा था पिछले मैच में कि उसकी शिद्दत जो थी वो सेकंड इनिंग्स में काफी बढ़ गई। ये रन आउट का चेक किया जा रहा था। वाइड बॉल होगी। अच्छा कमबैक किया सिंध ने। एक टाइम पे लग रहा था कि नॉर्दर्न 220-225 के करीब ख़त्म करेगा, लेकिन सुहेल खान, हसनैन, अनवर अली स्पेशली अच्छी बॉलिंग की, बाउंड्रीज कम कंसीड की और एक बार फिर से रन आउट, होम सेफली। मरमीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स में भी काफ़ी तेज़ है, फिट प्लेयर है। for 5 इस टूर्नामेंट में अगर एक और रन होता है नॉर्दर्न का तो इस टूर्नामेंट में 10 मैचेस में 8 दफ़ा 200 रन बने, जो
दाद देनी चाहिए, ग्राउंड्समैन को दाद देनी चाहिए। एक तो पिचेस जैसी बनाई हैं, ऊपर से आउटफील्ड जिस तरह मेंटेन की गई है, जहाँ पे बॉल इतनी तेज़ी से जा रहा है, तो इतने मैचेस हो रहे हैं लगातार, लेकिन क्वालिटी मेंटेन्ड है। बाउंड्री नहीं लगी। 200 स्कोर ज़रूर मुकम्मल हुआ। एक बॉल रह गई है नॉर्दर्न की इनिंग्स में। 200 पे 5। अच्छा कमबैक है, हसनैन अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। वेरिएशन ज़रूरी है, लेकिन लाइन लेंथ अगर ना पड़े तो उसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है। फिलहाल कोई बाउंड्री कंसीड नहीं की। लास्ट बॉल है। हसनैन और सिंध और सरफराज चाहेंगे कि विदाउट बाउंड्री ये इनिंग्स फिनिश करे, और उमर अमीन इस ताक में होंगे कि 4 या 6 हासिल कर सकें। सामने बहुत ही खूबसूरत शॉट। उमर अमीन ने चौके के साथ नॉर्दर्न की इनिंग्स मुकम्मल की, और मेरे हिसाब से तो नॉर्दर्न बहुत ही खुश होगा जिस किस्म की उन्होंने बैटिंग की। 204 रन्स बना लिए 20 ओवर में। बॉलिंग अटैक उनका बहुत ही ज़बरदस्त। तो सिंध के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा कि वो ये स्कोर चेस डाउन करें। आखिरी बॉल पे बाउंड्री हासिल की, अच्छी बॉल थी, लेकिन उमर अमीन इस बार ज़्यादा अच्छे साबित हुए। सिंध की बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है, अटैकिंग प्लेयर्स हैं, बैटिंग डेप्थ है। देखना होगा वो किस तरह इस टोटल पे जाते हैं। ये नॉर्दर्न का स्कोर कार्ड। जिशान मलिक 84, शानदार इनिंग्स खेली। हैदर अली एज यूजुअल अच्छे टच में थे। उमर अमीन की काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रही। 204 स्कोर हुआ तो बॉलिंग काफ़ी मुश्किल थी, लेकिन हसनैन की 2 विकेटें 37 रन दे के मेरे ख्याल बेस्ट बॉलर वही थे। सोहेल खान ने भी अच्छी बॉलिंग की 2 for 40, और 20 ओवर के इख्तिताम पे 204 पे 5। और टारगेट जो है वो 205। अब हम लेते हैं छोटा सा वक्फा।
Well, after the first 20 overs, Sindh cricket versus Northern, first 20 overs already done, halfway stage, 204 Northern made, and there were a lot of shots that were played today. Zishan Malik and Ali Imran started the proceedings, and from the word go it was just about getting boundaries. Smashed down the ground, and again short ball being pulled away. That's a good catch. First wicket down at 50. They'd already added 50 in 4.3 overs. And then Zishan carried on, hitting down the ground, a huge six that. And him and Haider Ali, Zishan went on to his 50. Haider Ali, well, nonchalantly picked this up into the stand. Then this was probably the biggest hit of the evening. And just carried on, peppering the boundary until Mir Hamza got a top edge. Sarfraz did the rest, but it was little relief as it was 139 already. Slow one being smashed through the offside. Zishan and struggled with a bit of cramp before getting cleaned up. Beautifully, Shadab, as he does, dealt in boundaries before bowling out to deep mid-wicket. Neat catch by Anwar Ali. And then Umar Amin hit one down the ground to the fence. Asif Ali couldn't get going today. Well, it was difficult to swing straight away. Anwar Ali again, very safe pair of hands he has. Last ball, and Umar Amin just smashed it down the ground to make sure that Northern finished on a high. So 204 of the 20 overs for Northern. 205 is the target, and join us shortly after the break for that very chase.
Welcome back to Multan Cricket Stadium. It is Northern versus Sindh, and here we are ready for the reply. It is 205, that's the target for Sindh. There's somewhere you feel that they've done well at a point when it was looking like it might go up to 230 plus. The two umpires walking in. They had a good day today. Flashing the brand new ball. Azhar Ali joins me to my right. 205. Knowing how the wicket is possible. Very much possible, and exciting chase coming up. Sindh will be happy that the way they finished the innings. At one stage it looked like Northern going to score around 230, 220, 230, but they managed to hold them to 205, which is the target now for Sindh, and they have the batting lineup to chase this down, and let's see how they start this inning. Sharjeel Khan and Khurram Manzoor both are hard-hitting batsmen. Sindh will be looking up to them, how they set this chase. If there's any pair that's tailor-made for a chase, these are the two guys. One, Khurram Manzoor, the highest scorer in this format in the National T20. Sharjeel, we know what he's capable of. And they do have a lot of muscle down the order as well. They've got hard hitters like Azam Khan. Hassan Ali bats well with the new ball. Finishers, you've got Anwar Ali and Sohail Khan. Danish Aziz also bats pretty well. He can give it a handy partnership. It's all important how they play the power play. So a good start from Northern. So this will be good. And not that these two haven't been amongst runs. Sharjeel got the man of the match in the previous game for Sindh. So it's all to play for here. But they're up against a very strong bowling lineup. All bowlers of Northern had represented Pakistan, and they're all good wicket-taker bowlers. And the wickets in hand will be important as the ball will get wetter in the outfield. If you have wickets in hand, you have all the chance that you can chase this total. Interesting contest will be the intensity of Haris Rauf, and when Sharjeel faces him, who likes space on ball. How they two compete with each other. Even Khurram Manzoor, for that matter, he needs more runs. He got a good score in the previous game. Both of them gave a good start. So, looking forward to this. Live from the Multan Cricket Stadium. Here we go. 205 to win. No run, but right in the middle of the bat. Again, key for the Northern as well. They would like to pick up early wickets, and new ball in the under lights are always important. And if you can swing it and pitch it up, there's always a chance you pick up wickets. Good run taken. Saw the opening game, 242. This morning we got batting first, 222. By those numbers, we've probably done well, Sindh, to pull Northern back by at least 20 or 15 runs. Could be very valuable in the end. Yes, very valuable. They bowled really well at the end. They had the batsman hit on one side of the boundary, so which always helps the captain. Also, he can set the field. And that's why they managed to minimize the damage at the end. Sharjeel Khan facing Haris Rauf now. Third man, and deep back was square leg. The two fielders outside the circle. The deep in the square leg is the one who can come into play. Oh, he's nicked it. He's nicked it. We heard it over here. A wide one outside the off stump. That's a big wicket. Haris Rauf strikes straight away in the first over.
Fantastic. Great bowling by Haris Rauf, pitching it right up. Invited the batsman to drive it. There was no feed from Sharjeel. It was just hands throwing at the ball. And a good catch by Rohil Nazir. Great start by Northern. Yeah, half-hearted attempt on a drive. Sharjeel goes for no score. And Sindh are in trouble with 1 for 1. Azam Khan being promoted in the order. That's usually not his number up till now in the National T20, but the clarity of the matter is Sarfaraz wants to use the power play. Yeah, they're top heavy, Sindh. So they would like to send their hard-hitted batsmen up front so they can utilize the power play. But this wicket of Sharjeel Khan will set them back massively, because Sharjeel is the one who they look up to. A very good batsman, but he falls today. Let's see what Azam Khan has up his sleeve today. 2 slips in place. Drives that one, beautifully done, leaned into it. Azam Khan displays that one for a boundary to start off with. Nicely timed by Azam Khan. Not a bad ball actually. If you have 2 slips, right length the ball, invited the drive, but nicely played by Azam Khan. Ooh. Oh, he just played inside it. Was a good Yorker. That was a ripper. That's just unlucky. It was a fantastic delivery by Haris Rauf. He's just trying to close the face of the bat. There's no square leg placed, so probably that made him play across the line. But that shape, late shape from Haris Rauf nearly took his off stump. Last ball of the over, finished well. Short ball, just flicking off the hips. That's going to be a boundary. Just said finish off well. Length, the issue. Good over, a wicket, but you still end up giving 9. It's 9 for 1. Mohammad Amir, first game for him from Northern. He's going to be bowling from the commentary end. He's got a slip in place. And he's going to be bowling to Khurram Manzoor. Third man and deep square leg, the 2 fielders once again. Again, there is a hold up in play. The umpire has taken the ball from the bowler.
The square leg umpire is just having a word. I don't know what this is about. We've had a few hold-ups today. Back, the umpire seems to be satisfied now. Mohammad Amir. That's really well played. That's superbly done into the gap. He struck really nicely. Through point 4. He smashed it actually. Width on offer, which is not the right line to bowl on this pitch. And once again, the action replay, this time more of a drive rather than a cut. The bats today and the bat speed. No regard for the bowler whatsoever. Fantastic batting by Khurram Manzoor. Again, there was fuller this time and he didn't try to hit too hard. The foot was on the pitch of the ball and he timed it through the cover for 4. Khurram seems to getting settled very quickly, which is very important after losing Sharjeel Khan. Nicely standing tall, just making sure he keeps the ball down. Plays it to third man. Northern is lucky to have so many wicket-taking options. Mohammad Amir is one. This is the wicket, Sharjeel Khan. No feet movement at all. And what a nice catch from Rohil Nazir. Was dipping a little bit. You can see there was no feet movement and just hands on the ball and he edged it. It's sort of a half-hearted attempt. Didn't even go with the full flow of the bat. It wasn't a wild swing. It was just hanging the bat out there, as you said, no foot movement. Slightly late on it as well. It's a good challenge for Azam Khan. He played a couple of good shots in the last over, facing Mohammad Amir now. They both need to trust themselves because there's enough time to chase these runs. Good call this from Khurram. Nicely responded. Like one thing about Azam Khan is he's performed well with confidence at different levels, different stages, PSL, full house. Here, you know that you're coming with that reputation. They expect you to hit it hard. But he's done well yesterday. A good partnership with his captain, Sarfaraz. Yeah, temperament is always important. Carrying all the expectation, being son of a great test cricketer for Pakistan, Moeen Khan, and then there's an extra pressure you carry onto yourself, but he did really well. End of second over, 19 for 1 Sindh. These days cricket has changed so much. Well, not a very recent change, but when you come to notice about players and their fitnesses and then their styles, some stand and deliver, they have the habit of using more of their power, getting the ball to go and cross that rope.
You don't really expect them to run quick between the wickets. The bats that are used. Nicely picked up. He planted that left foot. Oh, he has no regard for pace. He's got a good hand-eye coordination, this boy. This is the shot of the day for me. Wow, this is just amazing. Still head, still body position, good base, and just throw his hand at it. And it's just like a punch rather than a proper hit. It was just like he was just waiting for this length. Another 10 trees planted by that's what I was talking about just before that 6. If you can do that, then seriously, you're not going to be worried about a lot of things. If you can hit the ball that cleanly, standing where you are, you're just gifted. Yes, if you can hit the ball like that, you just need to trust yourself, stay out there, you'll have the opportunities. He did that in PSL as well. Slightly taking the pace off. Clever from Musa Khan. He knows that Azam Khan likes the ball to come onto the bat. Change of pace is very important, especially if a bowler like Musa Khan who can bowl 100, 145 plus, and then you can change the pace that actually disturb the flow of the batsman. He hasn't got hold of this one. Will it land safe? Yes, it does. Coming back for 2. Got big on him this time. Slightly shorter than what he received earlier, which he hit for a 6. I don't know, is this the right length to bowl to him? He didn't time this one, but I'm sure he's just waiting for this length. It has to be proper short pitch delivery if you want to bowl towards the body line. Otherwise, Azam Khan will hit you over mid-wicket every time. Full and driven pass mid-off. That's another boundary. This is entertainment here. In the power play, you're getting those boundaries and 6 going. End of the over. It's 31 for 1. Quram Manzoor has been watching everything from the non-strikers in the previous over. Now he's facing Mohammad Amir. Short in length, but not in height. Still manages to keep that down. Fielding might be the difference between the two teams. Northern are expected to field much better than Sindh, so in crunch games like this, fielding does matter a lot. So, but the way Sindh has started, the way Azam Khan and Quram is batting, the chase very much look on. Let's see what the experience of Mohammad Amir produces here. Pretty sure that he knows Azam Khan is going to try and go after him. He's pushed the long on. Now he's got a
mid-wicket now. It's going back to the rope. Third man has been brought in. So is he going to take him on? Good bowling by Mohammad Amir. He has two men back in that area, so he can bowl this length to him. You need experience on wickets like this, where the ball is coming on nicely. Someone like Azam Khan who's hitting the ball, timing the ball sweetly. So close to the body and cutting it to backward point. They will be looking for anything short and wide. Especially Khurram, he likes the cut shot. He likes the width. I'm sure Amir will be looking to bowl a lot straighter than last over. Yeah, he's been trying to cramp them for space. It's been a good over up till now. Once again, bowling to the field. That's how he's using his experience. Yeah, creating pressure with dot balls brings up wickets. So let's see. Khurram will be looking to go after Amir, I'm sure, on this ball. But they don't need to panic. You've seen in the last game or the games before, if you play till the end, you still have enough opportunity to get to that run rate at the end. And if you get frustrated, get panic early, then you will lose that chance. Asif is being pushed back to long on. Third man's been asked to come in. Amir for Manzoor. Nicely done again, mixing the length up. That's good stuff from Mohammad Amir. He's making the batsman guessing what length he's gonna bowl, what lines he's gonna bowl. Line probably straight. He have protection on the onside, not on the offside, so line would be quite straight, but the length and the pace of the wicket, pace of the ball, he will keep changing. Now mid wicket goes back and mid on comes up. So this time maybe it's a bit shorter length. A bit of a bluff there. That's an excellent over in the circumstances. 4 gone is 33 for 1. For those who've just joined us, this is the National T20 game being played at Multan Cricket Stadium, Northern versus Sindh. Northern were asked to bat first, scored 204, and they allotted 20 overs. And is Sindh's reply, 33 for 1 after 4. That's a good plan now by Shadab Khan, having mid-wicket and square leg back. So now you can afford to bowl this length. It's a wicket-taking option as well. Becomes a wicket-taking option because you have man catching there. You can stop the boundaries as well. He has to hit actually a 6 from this length. So nice bit of thinking by the captain. That's 4. It was too short. Musa knows it. You hear that cry, no.
It's just that how you keep your calm, you rightly said, not to panic if there is a good over somewhere. There will be. It's just you get value for shots with this outfield. And then you also keep remembering that the dew factor will bother the fielders later on. Yeah, ball will have to be a little bit more smart. He bowled the same length when the captain brought the mid-wicket up, so he needs to be a bit more smarter. Where is Azam Khan going? It's going to be tough for him to get back. Oh, the throw is wild. He would have been in serious trouble had Musa collected it cleanly. Massive movement in the game. A missed opportunity. I think it was Heather Ali. I think he had too much gas in the ball. Yeah, bad height to collect it on as well. That's a life, surely. That's action replay. He's going to pull you like that all day long. That length isn't going to help Northern's cause. This is not good. This is not good from Musa Khan. Either you have mid-wicket back and then bowl this length, or rather bowl fuller length to Khurram Manzoor, full and straighter. He'll be looking to hit this all day. The thing is, you see Khurram's angled bat. He's keeping it down. He's not trying to hit it in the air. Finds a fielder this time, though it was hit very, very hard. 42 for 1 in the 5th over. So you're keeping up with the pace in terms of chase. Run out opportunity can hurt them actually, not must, but still long way to go. But sometimes these kind of chances had to be taken. Slight misfield there by the keeper. Misses that one, probably due to lack of height. It's 5 bowled, it's 42 for 1. शर्जील खान 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन आजम खान को प्रमोशन बहुत पास आ रही है। वनडाउन आए हैं, इनकी अपनी ख्वाहिश थी कि इस पोजीशन पर आकर बैटिंग करें और उस ख्वाहिश का एहतराम किया टीम इंतज़ामिया ने, बासित अली और सरफराज अहमद ने। अच्छा रिस्पॉन्ड किया है इन्होंने 13 गेंदों में 23 रन बनाकर। ये अच्छा चैलेंज पोज कर रहे हैं इस वक्त नॉर्थन की मजबूत बॉलिंग लाइनअप को। उनके फास्ट बॉलर्स का जमा मर्दी से मुकाबला किया। स्पिनर्स का एक मुख्तलिफ चैलेंज दरपेश है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है। हमारे साथ शेजर मोहम्मद हैं जो आज़म खान के साथ इन्होंने बहुत क्रिकेट खेली हुई है। जी ट्रेनिंग भी बड़ी साथ हुई है हमारी साथ। तारिक बहुत अच्छा स्टार्ट दिया है अभी आज़म ने। पावर प्ले का भी 1 ओवर रहते हैं और अभी नवाज को इंट्रोड्यूस किया है अटैक में। लॉन्ग ऑन पर फील्डर हैं डीप मिड विकेट पर। ये पावर प्ले का आखिरी ओवर है। 2 के लिए कॉल किया।
लेकिन आउटफील्ड बहुत अच्छी है दीगर टीमों के मुकाबले में। नॉर्दर्न की उमर अमीन हर वक्त पहुंच गए थे। तो आजम खान इन्होंने अपना वेट लगता है काफ़ी कम किया है पहले के मुकाबले में। कितना कम हुआ जी? 32 kg इसके साल तो कम हो चुके हैं। PSL से पहले हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई थी, उसके बाद लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा ब्रेक आया था, लेकिन इसने जो कमबैक किया है और अभी 32 kg जो डाउन हुए हैं अभी तक, अगर ये अभी 1-1.5 साल अगर और ऐसी ट्रेनिंग कर लेगा तो फिर और भी इंशाल्लाह फिर इसकी डिटर्मिनेशन आप पिच में देखें, इसने डाइव किया मारी है, अभी रन आउट का चांस था, तो अपनी तरफ से एफर्ट तो पूरी कर रहे हैं आजम खान और बैटिंग आज बहुत अच्छी कर रहे हैं। पांच फील्डर खुर्रम मंजूर के लिए ऑफ साइड में दायरे के अंदर हैं। इस बार आजम खान ने उकसाया खुर्रम मंजूर को और जा पहुंचे डेंजर एंड पर। अच्छी क्रिकेट सिंध की। जी तारिक स्ट्राइक लेना चाह रहे थे आजम, थर्ड मैन पे बॉल गई, थोड़ी सी मिस फील्ड और आजम तेज भाग के बॉल पे पहुंचे। सिंध अभी अपने टारगेट के हिसाब से बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं, चेस ऑन है। या क्योंकि सिंध की टीम एक तो निस्फ सेंचुरी के बहुत करीब है और दूसरी अच्छी बात यह है कि इनकी विकेट एक ही गिरी है। अगर पावर प्ले में आपकी एक विकेट गिरी हो तो आपका आगे बढ़ने का हमेशा इम्कान रहता है। जी बिग लॉस शर्जील खान के 0 पे जाने से, लेकिन अभी जैसे खुर्रम मंजूर ने और आजम ने जैसे पार्टनरशिप बिल्ड की है, सिंध का भी अच्छा चल रहा है पावर प्ले। ये अच्छा फैसला था नवाज को निस्बतन जल्दी लाने का ड्यूज से पहले। दो सबसे ताकतवर टीमें हैं इस चैंपियनशिप की और अच्छा कमबैक किया। मोमेंटम सिंध के साथ है, आखिरी 5 ओवर से मोमेंटम जो है अभी तक सिंध के साथ रहा है। T20 क्रिकेट में पहली इनिंग से आखिरी 5 ओवर हमेशा अहमियत के हामिल होते हैं। एक और ज़ोरदार चौका, इस बार बैकफुट पर गए और क्रीज का बराबर इस्तेमाल किया तजुर्बेकार खुर्रम मंजूर ने। जी बिल्कुल तारिक, बहुत ज़ोर से पुल मारा है कारपेट की तरफ, चौका मिड विकेट की तरफ, थोड़ी सी पीछे नवाज ने की है, थोड़ी सी शॉर्टर लेंथ हुई, इतने खूबसूरती से खुर्रम मंजूर ने बैकफुट पे आके ज़ोर से पुल की बॉल चौके के लिए। खुर्रम मंजूर को आप थोड़ा सा भी रूम दें तारिक तो वो कट बहुत ज़ोर से मारते हैं और इनका पुल शॉट फेवरेट है। काउंटर अटैक स्पिनर्स पे ये बड़ा अच्छा करते हैं, स्वीप शॉट इनके आर्सेनल में है। बाउंड्री लाइन पर स्वीप शॉट रोकने के लिए कोई फील्डर भी नहीं है इस वक्त। उमर अमीन मिड विकेट पर खासे रिवायती पोजीशन पर खड़े हुए हैं। खुर्रम मंजूर इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ खेलना चाहते थे, बाल बचे। इस तरह ये छठा ओवर और पावर प्ले का मरहला तमाम हुआ 50 पर 1। मुल्तान में रात रोशन है। सिंध की टॉप ऑर्डर बैटिंग की भी यही सूरत हाल है। 50 रन पर की एक विकेट गिरी है। पार्टनरशिप इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान 49 रन की हुई है, जिसमें 9 बाउंड्रीज शामिल हैं। तो पावर प्ले हम कह सकते हैं कि सिंध की टीम ने जीता है पावर प्ले। जी जैसे शर्जील खान शुरू में विकेट गिरी, 50 रन ऑन द बोर्ड है 6 ओवर्स में, और अभी शादाब खान कैप्टन बर्थडे बॉय बॉलिंग पे आए हैं। एक एंड से नवाज बॉल कर रहे, दूसरे एंड से उन्होंने स्पिन अटैक इंट्रोड्यूस किया है। 8 मैचेस लगातार नॉर्दर्न अभी जीत चुका है। लीडरशिप, इनकी मैनेजमेंट, इनका डिसिप्लिन, इनकी टीम की यूनिटी साफ पिच पे और फील्ड में नज़र आ रही है। ऐसे ही लास्ट ईयर के चैम्पियंस हैं और इस साल भी अभी तक अनडिफीटेड चल रहे हैं। आज वापस उन्होंने 200 रन 204 रन किए हैं और अभी इनके पास जो बॉलिंग अटैक का जो एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि ये लोग पूरा बिलीफ रखते हैं अंदर कि ये लोग ये डिफेंड कर सकते हैं। शादाब खान
कप्तान और टॉप विकेट टेकर्स में से एक इस साल 2020 के, और उनके सामने दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो T20 क्रिकेट में, बल्कि हर तर्ज की क्रिकेट में, ख़ासतौर पर खुर्रम मंजूर उनने मनवाया हुआ है डोमेस्टिक में। आज़म खान ने, अगर आपको याद हो तो जो नेशनल स्टेडियम कराची में इफ्तिताही रात थी PSL 5 की, शादाब खान के खिलाफ बड़े बड़े शॉट्स खेले थे और जितवाया था उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स को उस रात। तो इसलिए ये बड़ा ज़बरदस्त अब ये मैचअप होने वाला है अगले कुछ लम्हों में इस चमकते दमकते मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। जी बिल्कुल, एक्साइटिंग फिनिश आज के मैच का तो लग रहा है। और PSL भी आज़म का बड़ा अच्छा किया था, मोटिवेटेड लग रहा था, एक इंटेंट के साथ उसने PSL में अपनी शुरुआत शुरू की और जो उसने छक्के लगाए थे और जैसे ये खेल रहा था, कोयटा के लिए एक बिग हिटर ज़रूरत थी और इसने उसको प्रोवाइड किया अपनी तरफ से। लाहौर की क्लब क्रिकेट में कहा जाता है कि छक्का दिया था, आपने कहा छक्के कराए थे। कराची की क्लब क्रिकेट में असल में तारिक मेरी उर्दू इतनी अच्छी है नहीं, कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ बहुत अच्छी बोलने मैं क्लब क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूँ। आज मैंने अपनी टर्म्स होती हैं। जी 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 होगी, बस आप ही हैं जो मुझे बेहतर बता सकते हैं इस चीज़ में। हम अपनी तरफ से सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। डॉट बॉल, खुर्रम मंजूर फोकस लग रहे हैं, लीडिंग रन स्कोर नेशनल T20 के। इस बार स्वीप किया, फील्डर हैं लेकिन एक बाउंस के बाद गेंद पहुंची। अच्छी कोशिश की थी, हैदर अली खड़े हुए हैं वहां पर। तो यहाँ हिकमत अमली शादाब के खिलाफ जो उनके की बॉलर हैं मुखालिफ टीम के, ये होनी चाहिए। आप 28 से 30 रन बनाएं इनके 4 ओवर्स में, दीगर बॉलर्स को अटैक कर सकते हैं, क्योंकि शादाब और हारिस रऊफ ये दो ऐसे बॉलर्स हैं इनके खिलाफ आपको मोहतात भी रहना होगा स्ट्रोक खेलने के साथ साथ। लेकिन आजम खान नहीं रुकने वाले, बहुत ही जोरदार वार किया उनका सनसनीखेज छक्का। स्लॉग स्वीप फॉर 6 आजम खान की तरफ से, बहुत बड़ा 204 रन्स पे ज़्यादा हर ओवर में बाउंड्री तो आपको चाहिए, तो पावर प्ले होने के बावजूद अभी इनको अपना पूरे अटैक मोड पे तो रहना होगा। आप जैसे देखें, स्लॉग स्वीप फॉर 6 आजम खान की तरफ से, एंड अगेन ओवर एक्स्ट्रा कवर, बिग 6, 2 पे 2, शादाब खान अंडर प्रेशर। यहाँ विद द स्पिन गए, बिल्कुल खातिर में नहीं ला रहे। हालांकि शादाब ने गेंद को हवा दी थी और आहिस्ता फेंका था। आजम खान, इनके वालिद भी एक्स्ट्रा कवर पर छक्का लगा दिया करते थे स्पिनर को। अब शादाब ने गेंद को तेज करना शुरू कर दिया है। ये टक सिक्सर थे ये दोनों जो आजम खान ने लगाए। 20 आजम की तरफ से। बहुत अच्छी क्रिकेट, जहाँ ज़रूरी है रिस्पेक्ट पे करना वो कर रहे हैं। अच्छा तवाज़ुन ला रहे हैं अपनी बैटिंग में। इस ओवर में 13 रन बने, 63 पर 1। ये अच्छी T20 की टीम का इंतखाब किया है इस बार बासित अली ने। सिंध की टीम में एहसन अली हैं, वो भी T20 क्रिकेट में एक माने हुए खिलाड़ी हैं। दानिश अजीज़ ये बाएं हाथ से खेलते हैं, ये भी चौके छक्के लगा सकते हैं अनवर अली की तरह। और सुहेल खान को भी नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते इस बैटिंग लाइनअप में। ये दोनों बैट्समैनों ने एक तो बिल्कुल पैगाम दे दिया है
कि ये स्पिनर्स को नहीं छोड़ेंगे जब तक ये रहेंगे पिच पर। बॉल देख रहे हैं और बॉल को बहुत जोर से मार रहे हैं। खुरम मंजूर एंकर कर रहे हैं अभी इस इनिंग को। हर ओवर में देखें बाउंड्री तो चाहिए, तो अगर उनके स्लॉट में होगा, फ्री माइंड होगी, उनको फ्री शॉट तो खेलना ही पड़ेगा। उठता हुआ शॉट, एक और जारहाना, और ये बुलंद तरीन छक्का था। अनदर मैक्सिमम आजम की तरफ से 10 और दरख्त आजम और टक और पीसीबी लगाएंगे। व्हाट अ शॉट! जो बॉल नजर आ रही है, हॉप डाउन द पिच और पूरी बॉल को देखते हुए बिग हिट। जो मैं आजम के बारे में बता सकता हूँ, उसके साथ ट्रेनिंग करता हूँ, उसके साथ ट्रेनिंग के अलावा हमारे नेट्स, हमारे सेशंस हो रहे होते हैं, कि इसको अब हर प्लेयर अपने तरीके से डिफरेंट होता है। कोई हैवी वेट पावर माइक टाइसन टाइप जान होती है, कुछ फाइटर्स होते हैं जो लाइट वेट होते हैं, तो कंपेयर करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो इसके पास जो जान है वो बहुत प्लेयरों में वैसे नेचुरली आती नहीं है, तो ये अपनी जान के साथ अगर आप इसकी एफर्ट देखें इवन इन द फील्ड, जो ये डाइव से मारते हैं, ये नेचुरल है। ये नवाज भाई थोड़ा आपने इनका वेट कम करने की बात की थी। इंज़िमामुल हक 2003 के वर्ल्ड कप से पहले अपना वेट कम करके गए थे वहाँ, लेकिन वो अच्छी बैटिंग नहीं कर सके थे, उनको रास नहीं आया था वो तजुर्बा। लेकिन इनका मामला बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा है। एक और जोरदार शॉट, फील्डर देखते रह गए हैदर अली। बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा, एक काबिल तहसीन हिटिंग है आजम खान की। डाउन द ग्राउंड पैर निकाल के एक और बार मिडल ऑफ द बैट फ्लैट 6 आजम की तरफ से। 49 पे ये आ गए हैं, जस्ट 22 बॉलों पे, और रुकने का बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं है। बॉलर को मजबूर किया शॉर्ट गेम गिराने पर। इस बार अच्छी फील्डिंग देखने में आई। जी तारिक, पहली बार नॉर्दर्न की बॉलिंग अंडर प्रेशर आज मुझे लग रही है इस टूर्नामेंट में। एक रन लेकर अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करना चाहते थे, लेकिन प्लेस नहीं कर सके। महंगा ओवर रहा, मुसलसल दूसरा, 8 के बाद 76 पर 1। नॉर्थर्न की टीम अब तक नाकाबिल शिकस्त है, 6 पॉइंट्स के साथ मुसलसल 8 मैचेस जीते हुए हैं, लेकिन आज तो हालात मुख्तलिफ लग रहे हैं। खासतौर पर इस पार्टनरशिप के जरिए जिसमें 76 रन अब तक बने सिर्फ 37 मिनट में। जी अभी आजम वापस ऑन स्ट्राइक आ गए, लेकिन आप जैसे इंजमाम की बात कर रहे थे कि उन्होंने भी फिटनेस पे अपना काम किया था और उनका थोड़ा सा वेट लॉस हुआ था, लेकिन उनसे बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं हुई थी, तो इस बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। और इस बार शॉर्ट गेंद को कट किया, ये वाइड गेंद थी विद द स्पिन। बहुत ज़्यादा विड्थ ऑफर की थी और मनमानी करने का मौका मिल गया। चौका लगाकर आजम खान ने अपनी धुआंधार निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। बहुत ही शानदार इनिंग आजम की तरफ से आज। 53 ऑफ 25 बॉल्स भी खेल रहे हैं और दूसरी 50 इनकी T20 क्रिकेट में, और फोकस ज़्यादा लग रहे हैं कि इनको बड़ी इनिंग खेल के मैच जिताना है सिंध को आज। इस बार अपना इरादा तर्क किया, गेंद को दूर देखते ही वापस लौटाए क्रीज में। शादाब ने ये चाल चली थी कि इनको स्टंप कराया जाए। जी बिल्कुल, थोड़ी सी ड्रिफ्ट बाहर छोड़ी थी कि ये शॉट खेलने जाए, लेकिन आजम जल्दी से वापस आ गए। ये उठता हुआ शॉट, फील्डर पहुंच गए आउट हो गया और दूसरे रन के लिए भी वापस आए।
एक तो ये हिट करते हैं और दूसरा बहुत जोर से वार करते हैं, फील्डर तक फौरन पहुंचती है गेंद डीप में। जी बहुत जोर से हिट मारते हैं और इनकी जो इंटेंसिटी विकेट पे ऑलरेडी इतने छक्के लगा चुके हैं, डीलिंग इन ओनली बाउंड्रीज। आजम खान आज सबको एंटरटेन किया हुआ है। इस बार आजम खान कैच आउट हो जाएंगे और ये दो फील्डर्स की कोशिश रंग लाई। मूसा खान ने गेंद को नीचे नहीं गिरने दिया, डेंजर मैन आजम खान आउट हो गए। या निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद हम कह सकते हैं कि कैरिड अवे। बॉल लेंथ खींच दी, हवा में गई, स्लिप अप हो चुका था, थोड़ी सी ब्रेक हुई, थोड़ी सी दूर थी और 1 टू मैनी आजम की तरफ से। अच्छा फायर किक स्टार्ट दिया है सिंध की टीम को, कैरी ऑन नहीं कर सके आजम खान आज। नाइस 50, 83 for 2 सिंध। एहसन अली उन्होंने ज्वाइन किया है खुरम मंजूर को। अपना पहला रन एहसान अली ने फौरन ही बना लिया। अब हिकमत अमली होनी क्या चाहिए, ये सवाल मैं रखूंगा शेजार मोहम्मद के सामने। अगले ओवर में 84 पर 2। शाबाश नवाज भाई। ये वाइड करार पाएगी, लेकिन अंपायर का ये ख्याल था कि शायद ये पैड को लगती हुई गई है। यहाँ शेजर मुल्तान में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के अगर आप करीब से गुजरे हैं तो लिखा हुआ होता है कि ये गो स्लो एरिया है। तो ये जो 8 से लेकर 14-15 ओवर का सफ़र होता है T20 में, तो ये भी कुछ ऐसा ही होता है आमतौर पर टीमों के लिए। लेकिन क्या सिंध की टीम अफोर्ड कर सकेगी यहाँ? जी तारिक, एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप तो सिंध आज खिला रही है इस मैच में। लास्ट मैच अगर आप देखें तो इंट्रोडक्शन एहसान अली का दानिश अजीज़ के साथ टीम में लाइनअप में बॉलिंग भी एक्स्ट्रा थोड़ी बढ़ाई। लेकिन जो यूजुअली मैच में अभी जैसे इनको 204 205 करने बाउंड्री पर ओवर तो इनको चाहिए, तो ज़्यादा रिलैक्स भी नहीं हो सकते, लंबा स्ट्रेच आउट इन्होंने करना है। लेकिन अभी खुरम मंजूर ने एक एंकर रोल प्ले किया हुआ जब तक आज़म पिच पे थे और आज़म धुमदार छक्के पे छक्के मार रहे थे, तो खुरम मंजूर उनके साथ सिर्फ टैग अलॉन्ग करके खेल रहे थे। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस खुरम मंजूर का तो अभी है, तो इनमें से एक को वही करना होगा। खुरम मंजूर अगर बैट आउट ये 20 ओवर कर सकते हैं एंड एहसान अली अपने पोटेंशियल पे खेल सकते हैं, तो ज़रूर ये 10 से 12 ओवर भी बड़ा फिट और अटैकिंग ही होगा। ये 10वां ओवर है। 10वें ओवर में अपने 100 रन मुकम्मल कर चुकी थी तकरीबन। इसी मरहले तक सिंध की टीम कदरे पीछे है अगर हम दोनों टीमों का मुवाजना करते हैं इस मकाम तक। और इस बार गेंद को गिरा बैठे, ये मौका जाता रहा दोनों हाथों से मोहम्मद नवाज के।
ज़्यादा कॉटन बोल्ड हुए नहीं हैं इस टूर्नामेंट में। जी होते नहीं, लेकिन जितने ज़ोर से अभी हसान नहीं मारते, यूजुअली ये कैचेस चिपक जाते हैं, लेकिन ड्रॉप कैच के सिचुएशन में भी ये आएगा, लेकिन नाइस ट्राई। ये शेजर मोहम्मद हैं, ये हनीफ मोहम्मद के साहबजादे हैं, उनके दरअसल पोते हैं, और शोएब मोहम्मद के साहबजादे हैं जो पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन थे 80 की दहाई में। मोहम्मद बिरादरान की ये तीसरी जनरेशन है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट यहाँ मुल्तान में भी खेल चुके हैं। 265 रन यहीं पर बनाए थे शेजर ने फर्स्ट क्लास मैच में, 10 के बाद 88 पर 2। शाबाश 88 for 2. Wide run rate of over 11. This seems to be getting more difficult, especially with that wicket of Azam. Azam looked to have this chase under control. It just seems today that there's slightly less dew. I haven't seen that vigorous drying of the ball. Marina, that last stint of commentary, we heard about universities, we heard about history. I think we should stick to the game. Chal, Harry! Easy, Tiger, easy. Khurram and Hassan Ali now in the middle. Sindh needs to be scoring quickly. The required run rate 11.79 on your screens. This man has the main role to play. Yeah, just getting to that stage. Manzoor going at just to overrun a ball. He needs to get a few boundaries away. He's not been able to time the ball as he normally does. Very good against spin. The short ball, he's not been able to put that one away. They can take heart by the fact that Northern just got 42 of the last 5. But to get there, they need some runs, and it is not happening. Shadab with a flighted leg spinner outside off stump. Hassan Ali obliges by top edging it. Change of pace again from Shadab. Perfect length, and Hassan Ali couldn't get under it. That has been the strength of Northern. They know how to strike at the right moment. Another good catch, and Sindh with 2 quick wickets. Now in trouble, Hassan has to go back. Scored 4. Sindh needs to think and think quick. Sarfraz Ahmed, the captain, walks in. It's a tough ask. He's not known for his power hitting, but you have to pull something out of the bag. For Manzoor too, he needs to find his timing quickly. At the moment, Shadab with this spell is pushing Sindh towards the wall. Sarfraz, at the toss, he said that the dew factor may be come into play. We haven't seen that much. Again opted to chase. Huge responsibility on him now. Just single,
and 11 gone. It's 93 for 3. Fireworks of Azam Khan. He's good at one knee, hitting the sweep shot over extra cover, straight down the ground, big hits. Every time he steps out, the ball crosses the boundary. Yeah, a bit disappointed. Sindh needed him out there. But brilliant innings, great entertainment came to an end. Right now it's the captain in the middle with Khurram. Maybe Khurram needs to take some charge here with Sarfraz occasionally looking for boundary rotating strike. Haris Rauf now brought into the attack. Got a wicket in his first over. Shadab proceeded to only let him bowl one over. He comes back now. Terrific T20 bowler. Extra pace always helps, but overall this northern bowling attack, it's so potent. You've got 5 international bowlers. All these bowlers have played for Pakistan, and I think if you look at Haris Sohail, Shadab and Amir, they're sort of almost automatic choices for Pakistan at present. So I don't think you can get a better attack than this in this national T20. Short ball, but still the boundaries not coming. So 110 now off 52 balls. For Manzoor on 33 of 30. Just feel that something has to give. And Merida is such a strong bowling attack. They still have Ahmad Wasim, the captain, to come into the side. I wonder who he will replace because everyone is performing. Stronger Northern will get once he's back, but right now it's the perfect amalgamation among these players. Everyone wants to take responsibility and perform. There's no loophole so far in the Northern side. That extra pace. T20 especially, we've seen many a bowler bowl quicker in T20 rather than the longer format because he knows that he's only going to bowl 4 overs. And the same with Haris Rauf. Obviously he just plays T20, but because of that extra pace, extra zip, it made such a huge difference. Musa bowls at good pace as well. Experience of Amir, Shadab, accomplished leg spinner, and then Nawaz, so every base covered. Inside edge, and the pace of Haris Rauf this time works against him. Goes to the fence. Yeah, he seems not happy. Did had a word with the captain just before this ball, probably wanted the fine leg, but he'll finer. Got 3 men patrolling on the leg side, but this time some runs for Sindh. They will be relieved. Short of length, just a single to the offside. It's 101 for 3.
104 required of the final 8. Musa comes back in the attack. It's almost an embarrassment of riches. Shadab can turn to any bowler and he'll provide him with control and wickets. Short again. Khurram Manzoor misses out again. It's not been the fluent Khurram Manzoor that we are accustomed to. Hasn't timed the short ball at all. Probably he's trying too hard, going early instead of timing. There are some loose balls, but they need to capitalize on it if they want to chase this target down. They cannot afford that run rate, keep climbing. Again, no timing on that either. And the caliber of Khurram Manzoor, he's the leading run scorer in national T20s, played all the editions, all 17 of them, so the expectation of him leading the run chase or him actually getting them over the line is immense. It's just a innings where it does happen to all players where you can't find the middle of the bat, and I think that's happening right now. But again, a boundary or a maximum can change all that, but Sindh needed to change very, very quickly. Sarfraz goes aerial leg side, doesn't reach the fielder, comes back for 2, so still searching for that boundary. Typical Sarfraz Ahmed shot, jumped deep into the crease, got the elevation but not the distance. They need boundaries, they know that it's not an easy task, but again chasing down this total, it never was against Northern. They need to pull up socks and score some boundaries now. Again misses out, hits a straight point, Khurram Manzoor. Direct hit, I think that was curtains for him. But Sarfraz this time, hitting the man at point. Either side of him, it would have been a boundary. Ali Imran then missed with the throw. He would have been gone by a long, long way. Northern, this is a brilliant unit as a fielding side. I mean, had it been a direct hit, it would have been curtains. Fieldings could make a difference in this game as well. Short again and again, just a single, and the required run rate keeps rising. It's gone on to 13.6, and once it hits that 15 mark, it just becomes extremely difficult. We know it's T20, we know the power of the players, but even then, it just becomes almost impossible, and you're then hoping for something extraordinary, and it's getting to that stage. Musa goes short this time. Khurram Manzoor gets the gap, gets the boundary pass point. 13 gone, it's 109 for 3. Azam Khan 55 of 28. When he was going, it looked as if Sindh would be well on target. But Shadab Khan once again with the ball. Does this so often. Gets wickets
in the middle overs, in the crucial middle overs. We're going to see him again. He's coming on. He's brought himself on. Final over of his spell. Well bowled, It Shady seems bhai. that if they don't get a big over in the next, well, this or the next over, it just seems as the game's drifting away quickly. Shadab got the right men in the right area right now. Got ball and the required run rate now up to 14. Well bowled, Shady bhai. He's got 3 men in the point, third man area, and 1 deep extra cover. Easy, Tiger. Smashes it to the leg side, but still a single. You talk about having good players in your side, but I think the main thing is you should know how to utilize your bowlers according to a perfect plan. That's what Sudden has done. Catch. Smashes it back. This time Sarfraz gets a boundary. Clever shot. Excellent, Shady bhai. Slightly short that delivery, but he made sure that he hit it straight past Sarfraz. Club that straight. Yeah, half chance. A difficult one for Shadab, but some pressure off Sindh. Ghumega. Does play spin well, does Sarfraz. For a Manzoor plays spin really well. It's just 7 off the first 5 deliveries still. Shadab can close the over out. It's a good over for Northern. And he does close the over out. 89 now required off 6. Sindh's worm just tapering off, and that's a huge gap to cover. They need some massive hits. Well, the thing that they can take heart from is that last 5 overs Northern just got 42. So maybe there's a glimmer of hope there, but they need to start finding the fence. They need to start getting huge overs, because 88 of 6 against the quality of Amir, Harish Rauf and Musa is not going to be simple. Amir's been brought back into the attack. 2 overs for 12. And watch out for those cutters that he bowled so well when he's bowling at the death. For Manzoor probably eyeing down the ground. Yeah, starts off with the cutter and with the angle. It was always going to go away from the right-hander, so if you make any sort of movement down leg side, try to free yourself up, it becomes difficult. They need boundaries, no doubt, but they also need a plan. Going against Amir will not be easy. They need to target some areas. They need to watch out for the cutters, slow ones and yorkers. But more importantly, they need runs. And that's it. That's the way to go. Amir with pace on the ball. Khurram Manzoor gets to his 50 in style. First 6 of his innings. He'll need a few more, but that was a fantastic shot. Giving some room, smashed it down the ground for 6. A beautiful way to bring up 50 for Khurram Manzoor. Much needed boundary and a strike. Full swing of the bat, beautifully hit. So does Amir go back to that cutter?
sort of wider Yorker, just a single. Obviously, very experienced armer in white ball cricket, but the defensive skills come to the fore. He bowls those cutters, also has that wide Yorker, which I feel is a very good option, especially on true wickets. If you try and bowl within the stump, sometimes the batsman has much better reach on it or much better swing on it. If you bowl it away from it, outside the off stump, most batsmen want to hit it leg side, and they're trying to drag it leg side. Makes it difficult when you're not giving them. This time he tries to go over mid-off, and Amir gets Sarfraz. So Sarfraz couldn't really get going. It's Mohammad Amir combined with Shadab who dismissed them. He had to go, he had to take the chance. There was no other option. Eyeing that mid-on area. Fielder was in circle, not a bad option, but couldn't execute well. Shadab Khan will never drop these. And Northern and Amir strikes. Sarfraz moves back to dugout. Gone for 11. And it's 124 for 4. Just seems as if this match is drifting away from Sindh. Anwar Ali walks in, he has a reputation, he can strike it long, strike it big, but he has to start striking it straight away and do it on a consistent basis, because the rate required is over 15 now. Need some heroics from Anwar Ali, but this wicket, just chipped it really. Easy catch, good captaincy, bringing back your strike bowler. Amir gave you another wicket, and Sindh is in deep waters right now. They need a master blaster to come up, and this man on your screen has all the ability to do it. Can he execute it and take Sindh home? Short ball, a dot ball. Sohail Tanveer played for Northern in the earlier games. He's replaced by Amir, so even the depth in the bowling attack, people on the bench is pretty super for Northern. Still Imad will seem to come, so short ball again, and ends with another dot ball. So 15 gone, it's 124 for 4. हारिस रऊफ आ गए हैं बॉलिंग करने के लिए फार एंड से। इस बार भी एक ही रन मिल पाएगा, एक रन से कोई फ़र्क नहीं आने वाला। हारिस रऊफ या दूसरे बॉलर्स तो इससे जब से आउट हुए आज़म खान, अज़हर अली, उसके बाद से बाउंड्रीज आसानी के साथ नहीं मिली और रन बनाने की जो दरकार औसत थी वो बढ़ती चली गई है। अब तकरीबन 16 से भी आगे निकल गई। बिल्कुल आज़म के आउट होने के बाद जो रिदम था उनकी, जो पार्टनरशिप जिस तरह लग रही थी, वो उसके बाद
से वो मोमेंटम टूट गया। ये हारिस रऊफ बहुत तेज़ बॉलर हैं इस वक्त सर्किट में। T20 के दुनिया के मुख्तलिफ बड़े आज़मों में ये नज़र आते हैं, ख़ुद को मनवा चुके हैं। जब इतनी ज़्यादा औसत हो जाएगी तो इन जैसे बॉलर्स के सामने और आमिर के तजुर्बे के सामने ये आसान नहीं होने वाला। बिल्कुल हारिस ने, जैसे आपने पहले कहा, बिग बैश हो या PSL हो, अपना नाम बनवाया है और जिस तरीके से बॉलिंग की है, बहुत सारे फैंस बनाए अपने, और नॉर्दर्न के लिए बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं। और ऐसी पेस के अगेंस्ट आते ही हिट लगाना बहुत आसान नहीं होता। गेंद काफ़ी ऊपर लगी लेकिन दो फील्डर्स के दरमियान गिरी। ये ज़रूरी 4 रन मिल गए। लम्हे के लिए लगा था कि शायद दोनों के दरमियान गलतफहमी पैदा हो गई थी। बिल्कुल अच्छा शॉट, बहुत ज़बरदस्त शॉट। लेंथ को पहले रीड किया और मिड ऑन के ऊपर से ये हिट लगाई। मिड ऑन क्योंकि ऊपर था, लेकिन जो आउटफील्ड है काफ़ी हार्ड है। आई थिंक कि जैसे ही ठप्पा खाया ग्राउंड पे और गेंद ने फिर स्किड किया, तो टाइम नहीं मिला उमर अमीन को ये गेंद रोकने के लिए। अच्छी लेंथ है ये अगेंस्ट अनवर अली, क्योंकि शॉर्ट बॉल पे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, सीधा हिट अच्छा मारते हैं। इस बार ऑफ साइड में कट किया, एक और चौका। खूबसूरत बैटिंग का मुजाहरा, विड्थ पेश की थी, हाथों हाथ लिया अनवर अली ने इसे। फील्डर स्क्वायर के बहुत ज़्यादा सामने हैं ऑफ साइड के, कोई मौका नहीं था उनके लिए। ऐसी ही बाउंड्रीज की ज़रूरत है सिंध को, अगर ये मैच के क्लोज भी जाना है उन्होंने अगर। और चेंज ऑफ पेस की दिया हारिस रऊफ ने, लेकिन बहुत ज़्यादा रूम दिया अनवर अली को, जिसका उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया। शादाब खान और हारिस रऊफ के दरमियान सलाह मशवरा हुआ है। ज़्यादा लंबा रनअप नहीं है हारिस रऊफ का, रुक रुक कर ये भागते हैं जसप्रीत बुमराह की तरफ। एक और शॉट गेंद, और इस मरतबा उड़ाया इसे अनवर अली ने। उनका आला छक्का, और ये आला ओवर है सिंध की टीम के लिए जो खेल में वापस आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त शॉट। मेरे ख्याल पहले से रेडी थे इस लेंथ के लिए, क्योंकि उनको भी पता है कि इनको शॉर्ट बॉलिंग होगी, और बहुत ही ज़बरदस्त उठा दिया और उसे मिड विकेट बाउंड्री से बाहर। ये बहुत ज़रूरी है कि मोमेंटम गेन करें किसी तरह, और इस ओवर में ऑलरेडी 15 रन बन चुके हैं। क्या ये शॉर्ट पिच बॉलिंग से अब गुरेज करेंगे? फील्ड में कोई रद्दोबदल नहीं है। मिड ऑफ पर शादाब खान दायरे के अंदर हैं, मोहम्मद नवाज एक्स्ट्रा कवर पर दायरे के अंदर हैं। थर्ड मैन को पीछे अब भेजा जा रहा है। जो पॉइंट पर डीप खड़े हुए थे अली, उनको आगे बुला लिया गया। अली इमरान को ऑन साइड में डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन। बाउंसर का लड़खड़ा गए अनवर अली। इस बार उनका ख्याल था कि वाइड दिया जाए। 16 ओवर जाता रहा, 139 पर 4। बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली है खुरम ने, लेकिन अब उनको फिनिश ज़रूर करना है। अच्छी शॉर्ट रेंज, विकेट की चारों तरफ स्ट्रोक खेले। ये मुल्तान का इंतहाई खूबसूरत और तारीखी शहर है। रात की रोशनियों में जगमगा रहा है ये शहर। पाकिस्तान के दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। ये आबादी से फाइन खेलने चले गए थे ऑस्टिन के बाहर से। दोनों एंड्स पर बाल बाल बचे, पहले LBW आउट होने से, फिर रन आउट होने से। बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई विकेट कीपर रोहिल नज़ीर ने। देखा कि खुरम मजदूर बैलेंस आउट कर चुके हैं अपना, और बॉलिंग एंड की तरफ थ्रो की, और ये डायरेक्ट हिट होती तो लाजमी
खुरम मंजूर का ये आखिरी बॉल होता। ये मुल्तान शहर, ये इंज़िमामुल हक का शहर है, पाकिस्तान के मशहूर कप्तान का। यहाँ ये पाकिस्तान के बड़े इल्मी तिजारती मराकज़ में से एक है। बहुत दूर दूर तक ये फैला हुआ है। क्रिकेट का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक़ पाया जाता है। PSL में हमने देख लिया था। वाइड करार दी गई, हालांकि काफ़ी आगे निकल गए थे ऑफ स्टंप के, इसलिए हैरान है मूसा खान। बिल्कुल ऑफ स्टंप की तरफ मूव किया था अनवर अली ने। देखना होगा कि कितना जो गाइडलाइन एक दी जाती है अंपायर को, जो आप अगर देख रहे हो थोड़ी सी ब्लू लाइन एक गाइडलाइन होती है अंपायर के लिए, तो देखना पड़ेगा कितना उससे बाहर था। खूबसूरत मनाजिर, क्रेडिट टू द कैमरामैन, जो शॉट्स इन्होंने लिए हैं नहायत ही दिलकश शॉट्स हैं ये। यह बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी ने कमल का फूल खिला दिया हो। ये स्टेडियम की तस्वीर है रात की तारीकी में। तेईस गेंदों का खेल बाकी है, 64 रन्स। ये आजकल की क्रिकेट में इतने रन्स बन जाते हैं। यॉर्कर अटेम्प्ट किया, दो फुल टॉस पर लेकर खेले, 1 रन का और इजाफा। ओवर की शुरू में बाउंड्री बहुत ज़रूरी है इस तरह के रन चेज में। बाउंड्रीज दरकार हैं सिंध को, और जब पहले 1 या 2 बॉल पे अगर बाउंड्री मिलती है तो अंडर प्रेशर आता है बॉलर, और अगर आप अंडर प्रेशर हों तो गलतियां करते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है चेजिंग साइड के लिए स्पेशली कि ओवर के स्टार्ट में उनको बाउंड्री मिले। शॉट और वाइड गेंद थी, फ़ायदा नहीं उठा सके। अगर ये उमर अमीन के ज़रा दाएं बाएं होती तो ये 4 रन मिल सकते थे, लेकिन प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं थी खुरम मंजूर की। हमने जैसे कि स्टार्ट में भी डिस्कस किया था कि फील्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, और नॉर्दर्न की साइड काफ़ी यंग है, काफ़ी एनर्जेटिक है, तो देखा है उन्होंने काफ़ी अच्छे स्टॉक्स भी किए हैं और कोई मिस फील्ड नज़र नहीं आई, तो ये इन दी एंड बहुत मैटर करेगा। बनेगा, 2 फुल टॉस खेलना फिर मुश्किल रहा अनवर अली के लिए। गेंदों और रन्स के दरमियान अब एक खलीज सी हायल दिखाई देती है। ये 41 की है, 20 गेंदों में 61 रन की ज़रूरत है। ये सिर्फ बाउंड्रीज इस खलीज को कम कर सकती है। बिल्कुल टारगेट मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। इसी दौरान खुरम मंजूर ने 3000 रन अपने T20 डोमेस्टिक के अंदर मुकम्मल किए। कंग्रेचुलेशन टू हिम, बहुत अच्छी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। काफ़ी अरसे से ये सिंध की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कराची की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया उनके लिए। और ये बड़ा खूबसूरत शॉट है। इस बार 4 रन्स खुरम मंजूर को मिले। 3000 रन्स उनके आज मुकम्मल हुए। पहले खिलाड़ी बने पाकिस्तान में जिन्होंने T20 में ये कारनामा अंजाम दिया, लेकिन उन्हें ज़्यादा खुशी उसी वक्त होगी अपने इन 3000 की, अगर वो यहाँ से जितवा कर जाते हैं। उसके लिए ऐसे ही खेलना होगा। बिल्कुल काफ़ी सेट हैं, और पहले से वो गेस कर चुके थे कि फुल एंड स्ट्रेट बॉल करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से बहुत की होता है आई ऑन द बॉल इस शॉट के लिए, और बिल्कुल भी आंख नहीं हटाई उन्होंने इस शॉट। जावेद मियांदाद एक ज़माने में खेलते थे ये शॉट, वेस्ट इंडीज़ के तेज़ बॉलर्स के सामने तीनों स्टंप्स अपने एक्सपोज करके कई बार आगे निकल जाया करते थे। इसी तरह बैकलिफ्ट उनकी बिल्कुल कम हो जाती थी, लेकिन शॉट अच्छा सर अंजाम देते थे जावेद। फील्ड में चेंज लाए हैं, अब फाइन लेग को पीछे भेज दिया है और स्केयर लेग को ऊपर लेके आए हैं, ताकि
ताकि जो पैडल है या रैम्प शॉट जिसको कहते हैं ये इनका रोका जा सके। इस बार दूसरी तरफ खेलने की कोशिश की, रिवर्स चले गए थे लेकिन नहीं कर सके कनेक्ट। 4 ओवर्स अब कोटा मुकम्मल हो गया। बिल्कुल एक हॉकी के खिलाड़ी की तरह उन्होंने स्कूप करने की कोशिश की थी, रिवर्स स्कूप 148 पर 4। ओवर्स में 57 रन की ज़रूरत है मोहम्मद आमिर का। ये आखिरी ओवर होगा और खुर्रम मंसूर अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं अभी भी। एक एंड पर वो 58 रन पर हैं, दूसरी जानिब अनवर अली बाउंड्रीज लगा रहे हैं। एज लगा, थर्ड मैन के ऊपर से फ्लाई कर गया, जहां मारना चाहते थे ऑब्वियसली वहां बॉल नहीं जा सकी, लेकिन इस वक्त तो बाउंड्रीज चाहिए जैसे भी आए। और इस मैच को और एक्साइटेड बनाने के लिए ये पार्टनरशिप का आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ओवर अच्छा जाता है तो आखिरी 2 ओवर काफ़ी मज़ा आने वाला है। पॉइंट के फील्डर दायरे में हैं, वाइड यॉर्कर इसके बावजूद करने की कोशिश की और मुंह की खाना पड़ी मोहम्मद आमिर को। थर्ड मैन के फील्डर फाइन थे और जो ऑफ साइड स्वीपर थे वो तकरीबन एक्स्ट्रा कवर पर थे। बहुत बड़ा गैप है यहाँ, उसी में गेंद को भेज दिया अनवर अली ने। बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया, वाइड यॉर्कर था, आगे बढ़े थे लेकिन टाइम कम था, लेकिन प्लेसमेंट बस एक्सेप्शनल। आसान शॉट नहीं था ये क्योंकि वो डाउन द पिच आए थे, टाइम कम था उनके पास, लेकिन इट वाज हार्ड टू पुट बैट ऑन द बॉल। गुड रिजल्ट। ये वाइड हो जानी चाहिए। अंपायर ने फैला दिए अपने दोनों हाथ। असद रऊफ की याद आ जाती है इनको देख के, ये नासिर हुसैन को। बिल्कुल, आज सुबह इन्होंने दूर से मुझे सलाम किया, ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंस रखना था तो मैंने तो अपनी तरफ से इनको असद रऊफ ही समझा था। करार दी जानी चाहिए थी, वही किया अंपायर ने। अनवर अली कोशिश कर रहे हैं कि बैट्समैन वाइड यॉर्कर फेंकी जाए, हालांकि फील्डर अभी भी नहीं है। पॉइंट के फील्डर दायरे में है अली इमरान, उन्हें अपने एंगल पे बहुत भरोसा है मोहम्मद आमिर को। बिल्कुल 17 रन का रन रेट रिक्वायर्ड है और आमिर की कोशिश सिर्फ ये है कि बाउंड्री ना लगे और उसमें 2 वाइड बॉल कर गए वो। बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है आमिर का ये। अगर सिंध को गेम में वापस आना है तो इस ओवर में ये बड़ा ओवर, इस ओवर का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। क्या रफ्तार में रद्दोबदल करेंगे इस बार, लेकिन यॉर्कर अटेम्प्ट किया और एक और चौका। अनवर अली बिल्कुल हिम्मत नहीं हार रहे, लड़ाई 10-10 जारी रखे हुए। तीसरा चौका है इस ओवर में, अभी तक 3 ही गेंदें गिनती में आई हैं। बिल्कुल, और 3 गेंदों पे 3 चौके और 2 वाइड एक्स्ट्रा। और ये जो बॉल था आमिर का, इसमें कोई गलती नहीं थी बॉलर की जानिब से। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस यॉर्कर को पहुंचा दिया फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। इट वाज ऑलमोस्ट अ परफेक्ट यॉर्कर, बट इस तरह के शॉट्स आजकल लगते हैं। एक और जारहाना स्ट्रोक, इस पर 2 रन बनाएंगे अनवर अली। मंसूर ने बॉल में बुला लिया था। जबरदस्त फील्डिंग,
आई थिंक मोहम्मद नवाज हैं। क्लियरली बॉल बाउंड्री की तरफ जा रही थी, लेकिन ये डिफरेंस है, ये रन्स मैटर करते हैं एट दी एंड। जब मैच क्रंच सिचुएशन में जाता है तो यही रन आपको बचाते हैं। 14 गेंदें हैं बाकी हैं, 41 रन बनाना है सिंध को मैच जीतने के लिए। बिल आखिल अपनी उंगलियों को घुमाया, गेंद पर कटर फेंका मोहम्मद आमिर ने, ऑफ कटर। बहुत सर डिलीवरी है, 2-3 तरह से ये स्लो डिलीवरीज फेंकते हैं मोहम्मद आमिर। दाद देनी पड़ेगी अनवर अली के एफर्ट को। आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त वो क्रीज के अंदर मूव कर रहे हैं, जिससे आमिर की लाइन डिस्टर्ब हो रही है। तो काफ़ी अरसे बाद भी खेल रहे हैं। इंग्लैंड में भी 8 गेंदें की थी, उसके बाद बाहर चले गए थे। जो इकलौता T20 मैच इन्होंने खेला। उनके रिदम के बारे में हम अजहर से पूछेंगे, ऐसा लगा है आज। और ये शॉर्ट गेंद, इस बार शानदार छक्का। अनवर अली जो हैं वो ये लड़ाई तन्हे तन्हा लड़ रहे हैं। 22 रन मोहम्मद आमिर के इस ओवर में उन्होंने बनाए। 10 तरफ इस छक्के पर लगेंगे। बहुत पीछे गेंद थी और अपनी क्रीज में भी बहुत पीछे चले गए थे अनवर। बहुत अच्छे तरीके से लेंथ को जज किया और गेंद को पहुंचाया स्केयर लेग बाउंड्री के बाहर। मैच एक सनसनीखेज मरहले में दाखिल होते हुए 2 ओवर सिर्फ रह गए और 35 रन गेटेबल है। अब जिसको कहते हैं कि ये उस जगह पे मैच आ गया है कि एक अच्छा ओवर आपको मैच जिता सकता है। तो आई थिंक सिंध के लड़कों में बिलीव होना चाहिए कि 35 रन 12 गेंदों में बन सकते हैं। अनवर अली का अच्छा टेम्परामेंट है, इस तरह के हालात में बैटिंग करने का। खुर्रम मंजूर के पास बरस का तजुर्बा है। और चौके के साथ आगाज किया इस ओवर का। बड़ा शानदार शॉट खुर्रम मंजूर का। 50 रन की पार्टनरशिप भी इन दोनों के दरमियान। रवानी वापस आ रही है सिंध की तरफ। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत शॉट। और मैच जो है अब इस तरह का होता जा रहा है कि सिंध आहिस्ता आहिस्ता गेम में वापस आ रहा है। और आपको ये नोटिस करना है कि आखिरी ओवर जो है वो हो सकता है स्पिनर से कराना पड़े। और अनवर अली स्पेशली स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत ज़बरदस्त छक्के लगाते हैं। तो मोहम्मद आमिर की 4 ओवर्स मुकम्मल हो गए हैं। मोहम्मद नवाज एक ऑप्शन हो सकते हैं आखिरी ओवर में। 1 रन लिया, कोई दिलचस्पी नहीं थी अनवर अली को वापस दूसरे के लिए मुड़ने में। किसी तरीके से भी 20 रन से नीचे इनको लेके आना है इस ओवर में। और बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप, 51 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है 22 गेंदों पे। और स्पेशल कंट्रीब्यूशन 36 रन का सिर्फ 15 बॉलों पे अनवर अली ने डोमिनेट किया इस पार्टनरशिप को। और वही की प्लेयर हैं इस वक्त सिंध के लिए। उनके लिए मिड विकेट बिल्कुल वाइड है। ये अच्छा यॉर्कर, स्विंगिंग यॉर्कर था अनवर अली। आखिर में सिर्फ 1 रन हासिल कर सके, मुश्किल। अच्छी फील्डिंग की शादाब ने। बहुत ही ज़बरदस्त यॉर्कर। और ये हारिस रोफ को भी पता होगा कि ये ओवर उनका कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए इस बॉल पे बिल्कुल आप हिट नहीं लगा सकते, राइट इन द ब्लॉक होल। और अनवर अली जिस तरह हिट लगा रहे हैं तो बेहतर ही होगा नॉर्दर्न के लिए कि वो ऑफ स्ट्राइक रहें जितना मैक्सिमम हो सकता है। आखिरी ओवर खास स्पिनर का हो, कितने रन ये चाहेंगे उसमें बनाना? 29 रन अभी चाहिए। इस ओवर की 3 गेंदें बाकी हैं। राउंड अबाउट 20 रन अगर हों तो गेम ऑन है। रन अप भूल गए हारिस रऊफ। आज की खासी पिटाई हुई है पहले दिनों के मुकाबले में।
आपको ऑप्शन मिले कि आपने 3 छक्के लगाने हैं 6 बॉलों में अगेंस्ट द स्पिनर ऑन दिस पिच, और जिस तरीके से अनवर अली बैटिंग करते हैं अगेंस्ट द स्पिनर, काफ़ी मुश्किलात पेश आएंगी बॉलर के लिए। ऐसा ऐसा कदम उठाने के बाद दौड़े हैं, पहले ही अपना बल्ला घुमा दिया था। खुर्रम ने क्रॉस खेलने चले गए थे, गेंद आहिस्ता आई, स्पिन सी होगी चली गई विकेट कीपर की तरफ। बिल्कुल वहाँ बॉल तो वहाँ था जहाँ पे हिट लग सकती थी, लेकिन मिस करके स्किड किया बॉल। थोड़ा शायद बाउंस उस तरह नहीं हुआ जिस तरह खुर्रम एक्सपेक्ट कर रहे थे। जैसे मैंने पहले कहा, सिंध की टीम के लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉलें अनवर अली फेस करें, क्योंकि वो इस वक्त ऑन चार्ज हैं। और आइडियली आखिरी 2 गेंदों पर खुर्रम मंसूर अगर 2 बाउंड्रीज लगा देते हैं तो फिर वो 20 रन रह जाएंगे आखिर में अनवर अली के लिए अगले ओवर में, वो मुमकिन हो सकता है। सेट बैट्समैन बॉलिंग कर रहे हैं दोनों को इस वक्त। हारिस इस वक्त इससे पता लगता है कि बॉल थोड़ा गीला हो रहा है और साथ साथ प्रेशर भी डेवलप हो रहा है। जैसे जैसे गेम एंड की तरफ जा रहा है, सिर्फ 8 बॉलें रह गई हैं और हर बहुत छोटी छोटी चीज़ इस वक्त बड़ी मैटर करती है। तो अक्लमंदी हारिस की तरफ से, बिल्कुल चांस नहीं लिया उन्होंने। और खूबसूरत यॉर्कर, बिल्कुल पिन पॉइंट। आप एक से ज़्यादा रन नहीं बना सकते अगर इतनी रफ्तार पर यॉर्कर आए आपकी तरफ। हालांकि यॉर्कर ऐसी गेंद है जिसके बारे में बाज़ लोग कहते हैं कि शायद T20 ने इसको किल कर दिया है, लेकिन अगर ये 90 मील या 90 प्लस पर आ रही हो फिर बैट्समैन को बेबस ही समझिए। बिल्कुल, और मैं स्पेशली दाद दूंगा जिस तरीके से फील्ड प्लेसमेंट की है, जिस प्लेयर की जो स्ट्रेंथ थी उसकी तरफ फील्ड पोजीशन रखी है। तो आई थिंक क्रेडिट जाता है कप्तान को भी और उनके बॉलर को भी कि जो उस फील्ड के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं। फुल टॉस सीधा खेला फील्डर के हाथों में और नवाज ये कैच ले उड़े और हारिस गिर गए हैं, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं। विकेट की खुशी भी नहीं मना सकते। अनवर अली जो आखिरी उम्मीद बनकर उभर रहे थे सिंध के लिए, वो लो फुल टॉस पर आउट हो गए, टाइम करना चाह रहे थे। हारिस की ये 10वीं विकेट थी इस कैच की बदौलत इस चैंपियनशिप में। आई थिंक ये मैच है नॉर्दर्न के लिए, अनवर अली की विकेट, और अब बहुत मुश्किल हो गया टारगेट उनके लिए। बहुत ज़बरदस्त एफर्ट थी अनवर अली की जानिब से। 37 रन बनाए उन्होंने 17 गेंदों पर और 217 का स्ट्राइक रेट, 177 पर 5। बाकी मादा 6 गेंदों में 28 रन की ज़रूरत है। ये रन मुमकिन है बनाना, लेकिन सुहेल खान बहुत देर से आए हैं यहाँ खेलने के लिए। और अगर अनवर या सुहेल खान में से किसी एक को सरफराज अहमद अपनी जगह पर भेज देते तो शायद इस वक्त नक्शा मुख्तलिफ होता है इस मुकाबले का। यही गलती की थी सिंध ने पहले मैच में। असद शफीक जब खेलने चले आए थे सरफराज के साथ, इस बार खुर्रम मंसूर और सरफराज मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते रहे। सरफराज ने वैसे 5वें नंबर के ऊपर काफ़ी मैचेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स को भी जिताए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली का दिन नहीं था आज। काफ़ी सारी चीज़ें सिंध को देखनी है अपनी टीम के अंदर। ये वाइड गेंद और 27 रन की ज़रूरत है। बचना चाह रहे हैं, दूर दूर बॉलिंग करना चाह रहे थे, बाहर से बाहर स्पिन बॉलिंग। बिल्कुल आसान नहीं होता स्पिनर के लिए जब आपको पता हो कि बैट्समैन जो है आपको सिर्फ छक्का मारने के लिए निकल रहा है। और फिर दूर गेंद फेंकी और वाइड
पर तकरीबन वाइड पर ये स्टंप आउट हो गए, या फिर ये कॉट बिहाइंड करार दिया है, क्योंकि इनको बॉलिंग एंड पर खड़े हुए अंपायर ने आउट करार दिया, उनकी उंगली फजा में बुलंद हुई। बिल्कुल मेरे ख्याल में कॉट बिहाइंड हुए हैं और इसका ये मतलब है कि वाइड भी नहीं होगा और पहले से ही निकल आए और मेरे ख्याल नवाज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो निकलेंगे अब सामने हिट मारने के लिए और मेरे ख्याल में जो टारगेट है वो उनसे दूर होता जा रहा है और मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। 178 पे 5। दानिश अजीज़ बैटिंग करने के लिए आए हैं और लेफ्ट हैंडेड हैं और हीरो बनने का बहुत ही नादिर मौका इनके हाथ में है। 5 छक्के, एनीथिंग पॉसिबल इन क्रिकेट, तो बैक करना चाहिए अपने आप को इनको। यहाँ बॉलर भी इस वक्त बाएं हाथ के लगे हुए हैं, हिकमत अमली बिल्कुल वाज़े है, दूर बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त, बैट्समैन से बचना चाह रहे हैं ताकि छक्का न लग सके। शाबाश नवाज भाई, तक 2 वाइड गेंदें कर चुके हैं। उठा दिया पॉइंट के ऊपर से, आउटफील्ड बहुत तेज है और फील्डर इसे नहीं रोक सके। 4 रन और 4 गेंदों में 22 रन बाकी हैं, अभी मुमकिन है 4 छक्के लग जाएं, 3 छक्के लग जाएं, 1 चौका लग जाए। बिल्कुल, और एटलीस्ट बाउंड्री ज़रूर स्कोर करने में कामयाब हुए, लेकिन यहाँ पे छक्कों की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। हर बॉल पे छक्का एक्सपेक्टेड है दानिश अजीज़ से। और ये लीजिए पहला छक्का इस ओवर का, बहुत दूर तक इस गेंद को पहुंचा दिया स्टैंड में। शाम के वक्त लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर के लिए बॉलिंग करना आसान नहीं है, ड्यू के सबब। दानिश अजीज़ बहुत देर से आए, बहुत दूर छक्का लगाया। देखिए दो छक्के यहाँ पे लगे तो ज़रा मैच इंटरेस्टिंग हो जाए, और एज क्रिकेट फैन आप देखना चाहते हैं कि मैच और क्लोज हो। हम भी यहाँ पे चाह रहे हैं कि ज़रा एक आधा छक्का और लगे, सनसनीखेज़ी बढ़े। दूर रह गए गेंद की पिच से, और अब ये 2 ही गेंदें बाकी बची हैं, 15 रन्स बाकी हैं, तो अब इक्वेशन जो है वो नामुमकिन की तरफ चली गई है। अगर बाकी मतलब 2 गेंदें अपनी जगह पर गिरती हैं, नो बॉल या वाइड बॉल करार नहीं पाती। सिंध के बॉलर्स ने इब्तिदा में शायद उतनी नबी तुली बॉलिंग नहीं की पहले 10 ओवर्स में जितनी उनसे तवक्को की जाती। ये एक और विकेट का मौका है, अच्छा लो कैच लिया बाउंड्री राइडर आसिफ अली ने। एक और विकेट गिर गई, सुहेल खान आउट होने वाले बैट्समैन हैं। बेहतरीन कैच आसिफ अली की जानिब से, जो कि मैच तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन स्टिल एक अच्छी टीम की निशानी है कि वो आखिरी बॉल तक अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रखती है, और वही आसिफ अली ने दिखाया कि इवन के मैच ओवर हो चुका है, लेकिन तमाम फील्डर्स, तमाम प्लेयर्स जो हैं वो इस वक्त स्टिल जाग रहे हैं और स्टिल जो है वो अपनी पूरी एफर्ट दे रहे हैं। सुहेल खान एक बॉल उन्होंने फेस की और 0 पर आउट हुए। मीर हमजा आखिरी बैट्समैन। दानिश अजीज़ ने इसे लॉफ्ट किया सामने की तरफ, और इस तरह ये रस्मी कार्रवाई पूरी हो गई। ये मैच आखिरी गेंद तक तो नहीं गया, लेकिन आखिरी ओवर तक ज़रूर गया।
काफ़ी दिलचस्प मुकाबला हुआ इन दो मजबूत टीमों के दरमियान। एक और हाई स्कोरिंग मैच था जो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ख़त्म हुआ। और एक बार फिर खुश वापस जा रहे हैं नॉर्दर्न के खिलाड़ी। शादाब खान की कप्तानी में उन्होंने मुसलसल चौथा मैच जीत लिया है और आहिस्ता आहिस्ता सेमीफाइनल के लिए अपना रास्ता हमवार कर रहे हैं। ये मुसलसल 9वीं कामयाबी है इस फॉर्मेट में नॉर्दर्न की टीम की। विनिंग स्ट्रीक के एतबार से ये तीसरी टीम है पाकिस्तान में जिसने इतने ज़्यादा मैचेस लगातार जीते हैं। सियालकोट स्टैलियंस ने 25 जीते थे, लाहौर कलंदर्स ने 10 मैचेस लगातार जीते थे और उन्होंने 9 जीत लिए। बिल्कुल स्ट्रेंथ शो की आज फिर नॉर्दर्न ने बहुत ही ज़बरदस्त क्लिनिकल परफॉर्मेंस। मुझे आसान नहीं था सेकंड टाइम डिफेंड करना टोटल को, क्योंकि बॉल भी गीला होना था। लेकिन जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि जिस तरह की उनकी बॉलिंग है, जिस तरह की उनकी बैटिंग है और फिर जो एनर्जी वो फील्ड में शो करते हैं वो बहुत बेहतरीन है। और डिफरेंस क्रिएट किया फील्डिंग ने उनकी, स्पेशली कि जहाँ पे प्रेशर आया वहाँ के उनके फील्डर्स ने अपने कैचेस भी पकड़े और जो बाउंड्रीज़ हैं उनको भी ब्लॉक किया। तो आई थिंक ये जब 13 रन्स का डिफरेंस है, ये फील्डिंग काफ़ी मैटर करती है इसमें। तो आई थिंक ये बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और सिंध के लिए सोचने का मौका ज़रूर है, लेकिन बहुत सारी थिंकिंग उनको करनी है उनके थिंक टैंक को कि किस तरीके से उन्होंने लेके चलना है टीम को आगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रन्स उन्होंने फील्डिंग में लीक किए। ये दोनों टीमों के ऑफिशियल्स और खिलाड़ी एक दूसरे से मिल रहे हैं। आजकल ये रस्म जो है हर क्रिकेट मैच के बाद देखने को मिलती है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो आपको करीब लाता है। तो आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला भी अपने इख्तिताम को पहुंच गया। ये सिंध का जवाब था। शर्जील खान 0 पर आउट हुए और उसी वक्त ही ये टीम दबाव में आ गई थी। खुर्रम मंजूर और आजम खान जब खेल रहे थे लगता था कि वो मैदान मार लेंगे। आजम खान जिस तरह चौके छक्के लगा रहे थे फास्ट बॉलर्स को और उसके बाद स्पिनर्स को, लेकिन शादाब खान ने उन्हें मूसा के हाथों कैच आउट कराया। फिर एहसान अली जल्दी आउट हो गए। सरफराज अहमद 11 रन बना सके। अनवर अली ने 17 गेंदों में 37 रन बनाए। एक उम्मीद की जो झलक थी वो दिखलाते रहे। यहाँ तक बॉलिंग का ताल्लुक है, हारिस रऊफ ने एक बार फिर बड़ी आला बॉलिंग की, 2 विकेटें ली। उनके यॉर्कर काबिल दी थे। मोहम्मद नवाज ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया और शादाब खान विकेट टेकर हैं, उनके विकेट लेने का सिलसिला जारी है। उन्होंने भी 2 विकेटें हासिल की। नॉर्दर्न ने पहले बैटिंग की, 204 रन बनाए। उनके 5 खिलाड़ी आउट हुए। ओपनर जीशान मलिक ने 84 रन स्कोर किए। टॉप स्कोरर है हैदर अली ने जारहाना 35 रन बनाए और हसनैन और सुहेल खान ने सिंध की जानिब से 2-2 विकेटें उड़ाईं। जवाब में सिंध की टीम 191 से आगे नहीं बढ़ सकी और 13 रन से उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। तो यहाँ हम एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।